10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 25 years ago, the technological landscape was a vastly different world. The internet was an unfamiliar frontier, and mobile phones were heavy luxury bricks reserved for the few. It was in that era of curiosity that Digit was born. For 25 years, Digit didn't just chronicle technology, we helped define its trajectory. While others took the easy route, we chose the harder path. Trend-setting through deep, analytical, and uncompromising tech journalism. At the very heart of Digit lies the Digit Test Labs, our fierce badge of honor. Our data-backed objective reviews have sparked intense debates and tense confrontations with global tech giants. But through every storm, our editorial integrity remained non-negotiable. Brands learned quickly. A positive score from Digit had to be earned through engineering excellence. But a brand that chronicles disruption must also disrupt itself. As readers moved from ink on paper to pixels on screens, Digit transformed. After joining the Times Network family, Digit evolved from India's most widely circulated tech magazine into a multi-platform powerhouse. From deep-dive YouTube reviews to the Digit Show on national television, from the Digit Squad network of over 6,000 influencers to our new Digit Shop and Score gaming championships. We met tech enthusiasts everywhere. Today, Digit reaches over 10 million monthly users and generates more than 50 million monthly video views. And now, we are redefining product discovery with the all-new Digit AI Finder, a personalized, AI-driven discovery brain, fueled by decades of lab testing and enabling over 500 crore rupees worth of product purchases every year. From the iconic 01 Awards to Digit.ai, our commitment to truth has only grown stronger. Now, as we celebrate this historic 25-year milestone, technology has completely transformed our daily lives. The boundary between computing devices and household appliances has vanished. Our homes are smarter, hyper-connected, and more efficient than ever before. And so it was time for Digit to take its next leap of faith. Today, we bring our legendary testing standards, our data-backed rigor, and our uncompromising credibility into every corner of the Indian home. Welcome to the very first Digit India's Top Appliance Awards, DTA, presented by Times Network. To our millions of readers, viewers, partners, and the entire tech ecosystem, thank you for 25 extraordinary years. The first quarter century was just the beginning. Tonight, we celebrate the true innovators who are shaping the future of living spaces across India. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 25 years ago, the technological landscape was a vastly different world. The internet was an unfamiliar frontier, and mobile phones were heavy luxury bricks reserved for the few.
It was in that era of curiosity that Digit was born. For 25 years, Digit didn't just chronicle technology, we helped define its trajectory. While others took the easy route, we chose the harder path. Trend-setting through deep, analytical, and uncompromising tech journalism. At the very heart of Digit lies the Digit Test Labs, our fierce badge of honor. Our data-backed objective reviews have sparked intense debates and tense confrontations with global tech giants. But through every storm, our editorial integrity remained non-negotiable. Brands learned quickly. A positive score from Digit had to be earned through engineering excellence. But a brand that chronicles disruption must also disrupt itself. As readers moved from ink on paper to pixels on screens, Digit transformed. After joining the Times Network family, Digit evolved from India's most widely circulated tech magazine into a multi-platform powerhouse. From deep-dive YouTube reviews to the Digit Show on national television, from the Digit Squad network of over 6,000 influencers to our new Digit Shop and Score gaming championships. We met tech enthusiasts everywhere. Today, Digit reaches over 10 million monthly users and generates more than 50 million monthly video views. And now, we are redefining product discovery with the all-new Digit AI Finder, a personalized, AI-driven discovery brain, fueled by decades of lab testing and enabling over 500 crore rupees worth of product purchases every year. From the iconic 01 Awards to Digit.ai, our commitment to truth has only grown stronger. Now, as we celebrate this historic 25-year milestone, technology has completely transformed our daily lives. The boundary between computing devices and household appliances has vanished. Our homes are smarter, hyper-connected, and more efficient than ever before. And so it was time for Digit to take its next leap of faith. Today, we bring our legendary testing standards, our data-backed rigor, and our uncompromising credibility into every corner of the Indian home. Welcome to the very first Digit India's Top Appliance Awards, DTA, presented by Times Network. To our millions of readers, viewers, partners, and the entire tech ecosystem, thank you for 25 extraordinary years. The first quarter century was just the beginning. Tonight, we celebrate the true innovators who are shaping the future of living spaces across India. Ladies and gentlemen, welcome to the Digit India's Top Appliance Awards 2026. Good evening, ladies and gentlemen. A very warm welcome to all the innovators, creators, industry leaders, and partners in this room who continue to shape the future of digital excellence in India. Let's start tonight with a big round of applause for yourselves, because honestly, you've earned it just by showing up looking this good. I am Yash Adhana, your host for the evening, and making sure I don't say anything wrong tonight is my co-host, Krishika. No pressure, Yash. Tonight, we come together for one of the most credible and eagerly anticipated celebrations in the world of technology. Digit, India's Top Appliance Awards 2026 edition. Proudly presented by Times Network. Powered by Hire, co-powered by OneUp Trade. We would also like to thank our strategic partner, LG, sustainability partner, CellSmart, and outdoor partner, Heights. For 25 years,
Digit has set the benchmark for honest testing, unbiased reviews, and data-driven evaluation. No shortcuts, no favors. And strip away all the marketing fluff, all the superlatives, and here's the truth. These aren't just products sitting pretty in a showroom. They are the machines quietly running your life. A fridge that keeps your family's next meal from going bad. The washing machine that buys you back an hour every single day. The air conditioner that decides whether you sleep tonight or just lie there sweating and regretting all your life choices. We don't think about appliances until they stop working. And that's exactly why getting the right one matters so much. And that's exactly why, for the first time, Digit is giving appliances a stage of their own. 25 years of the same rigor we've applied to the phones, laptops, audio devices, now fully turned towards the products that run your home. So sit back and get comfortable because the next couple of hours will be the biggest celebration of home appliances and consumer durables in India. And now, to set the tone for everything that lies ahead this evening, it's my absolute privilege to invite a leader who has played a pivotal role in driving digital transformation across the Times network. Someone who has consistently championed data-driven storytelling, embraced cutting-edge technology, and helped shape the future of modern newsrooms. So ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome Chief Operating Officer and President of Times Network Digital, Mr. Rohit Chadha. A huge round of applause, everyone. Good evening, everyone. I would like to welcome Dr. Jitendra Singh Ji, Union Minister of Science and Technology and Earth Sciences, Shri Brajesh Pathak Ji, Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh, distinguished guests, industry leaders and partners, and our viewers back home. A very warm welcome to the inaugural edition of Digit, India's Top Appliance Awards 2026. For over a quarter of a century, Digit has stood as a beacon of independent technology journalism in India. This journey has been especially interesting for me personally. Of the 25 years of Digit's journey, for 16 of them, I was a consumer of the brand. The next 7, I was a competitor as a media CEO trying to figure out the secret sauce behind Digit's success. And the last 2 years have been special. They have been spent as a custodian and leader responsible for the next phase of growth of the brand. For 25 years, tech enthusiasts, professionals, and everyday consumers have relied on us for one fundamental reason: uncompromising trust. And while Digit has a 25-year legacy, our engine is fueled by youth. Over 50% of our team today is Gen Z. They bring fresh perspective, relentless curiosity, and zero patience for marketing hype to everything we test. We test, we measure, and we evaluate in real-world conditions. Today marks a natural and significant evolution of that long-standing commitment. Technology is no longer confined to our smartphones and laptops. Today, it lives in our living rooms, our kitchens, and our everyday routines. The Indian home appliances market size stands at over $50 billion and is forecast to reach $72 billion by 2031. Whether it's an AI-driven washing machine, an energy-efficient air conditioner, a robotic vacuum, or a smart television, home appliances are among the most consequential long-term purchases an Indian household will ever make.
Yet, for the average consumer, making the right choice has never been more challenging. In a market flooded with buzzwords, flashy specs, and heavy marketing claims, how does a buyer distinguish genuine innovation from clever hype? That is precisely why we created the Digit India's Top Appliance Awards. Our goal is simple: bring testing-led scrutiny to the products that power modern Indian homes, ensuring consumers can buy with absolute confidence. Every single product honored tonight, spanning across more than 12 major product categories, from water purifiers to smart security, underwent hands-on, rigorous evaluation at Digit's specialized testing facilities. We assessed how these products perform under real-world Indian conditions, evaluating their measurable performance, usability and design, energy efficiency, and dependency, including long-term ownership experience. The data was verified by a 5-member jury team, including our in-house experts and editors, along with our esteemed partners, Mr. Navkendra Singh, Associate Vice President for Data and Analytics, Devices and Ecosystem, India, South Asia, and ANZ at IDC, and Mr. Tarun Pathak, Director Counterpoint. To our award winners tonight, congratulations. Your products didn't just meet industry standards, they have set new ones. You demonstrated that true innovation lies in solving everyday consumer pain points. To the wider industry, we hope these awards serve as an independent reference point, a catalyst that inspires continuous innovation, higher quality, and greater transparency. At Times Network in Digit, we will continue to champion the consumer's voice through objective analysis and verifiable truth. With that, here is a quick look at the effort put in by the Digit team to bring you these awards. Let's have a look. Every single day, millions of Indian homes rely on appliances to keep life running smoothly. From the refrigerators keeping our food fresh to the ACs battling harsh Indian summers, we invest in these machines expecting reliability. Yet, when it comes to buying one, consumers are flooded with flashy marketing claims, paid reviews, and superficial spec sheets. The industry was missing one fundamental pillar: a truly credible, unbiased, and rigorous rating and testing system built specifically for Indian conditions. We needed a benchmark built on real truth, not promises. That's where Digit stepped in. Recognizing this critical gap, Digit took a massive leap of faith. Driven by decades of tech testing heritage and a commitment to consumer trust, our team worked relentlessly behind closed doors to conceptualize something revolutionary. Announcing Digit India's Top Appliance Awards, DTAP, presented by Times Network. This wasn't just a vision, it was an unprecedented undertaking. Over 3 intense months, more than 140 products were sourced, cataloged, and evaluated, spanning a massive 2,000+ hours of relentless testing from start to finish. Most awards measure popularity. We set out to measure performance through a strictly data-driven evaluation of household appliances sold in India. Every single nominee was subjected to controlled, repeatable testing inside Digit's new appliance laboratory, using calibrated instruments and category-specific test procedures. Each product was examined across an exhaustive matrix of more than 150 technical parameters, covering raw performance, energy efficiency, consistency, usability, and long-term ownership. We looked far beyond specification sheets. Using advanced thermal imaging,
power analysis, acoustic measurements, and real-world stress tests. Even the end-to-end customer support cycle was rigorously examined. Thousands of individual results were cleaned, cross-checked, and meticulously analyzed. Outliers were investigated, tests were repeated where necessary, and every single score was verified before comparison. The laboratory data was then reviewed under the independent oversight of an expert jury, bringing technical evidence and decades of industry experience together. I think this is the most exhaustive list of categories what we have scanned. So very interesting. In fact, if you look at the entire selection process and the entire range of the categories, it's very exciting how each of these categories have a very scalable impact on the buying purchase journey and pattern as well. Plus, if you look at the entire category, that is becoming very important because of the integration of the technology into it, because these categories are getting smarter and smarter day by day, and having a great know-how of these categories will go in a long run, because like I discussed, the replacement cycle of these categories are almost like 10 years or even more than that. So it's very, very important. So yeah, kudos to the team Digit for the entire process and bringing this out in the front of consumers. I think since these are very in-depth, these are actually on the specification and the features and the technical abilities of these appliances and the use case at the home, because the Digit team has used these products in their lab. This will really help the consumer in making very wise and informed decisions. No popularity polls, no marketing claims, no shortcuts, only measured performance, independently assessed. Digit India's Top Appliance Awards, tested by data, validated by experts, built to identify the household innovations that genuinely deserve recognition. Now I would like to call on stage Mithun Mohandas, Senior Editor, Digit, for a more detailed breakdown of our testing capabilities. Thank you, everyone. Over to you, Mithun. So to begin, for years we have been doing consumer appliances. These are smartphones, laptops, and all sorts of PC components. And while you've seen 150 parameters being called out in the AV, that's the lowest number possible across all categories, because there are certain categories in which we get to test a lot more. Because with PC components and smartphones, we get kernel level access. That's a very deep level of access that we get. And in such cases, we end up getting close to 1,500 parameters. But with appliances, it's a slightly different ballgame, because you don't get that level of access to the software, the firmware of the appliance. So we had to be a little bit creative when it comes to testing appliances. So the way we went about it is we got a lot of appliances from multiple companies. We brought it under our test labs. We went through our 25 years of legacy in figuring out how to test appliances, to see where we can crack and find a piece of data that would be a distinguishing factor. And that's where we decided to look at appliances in a slightly different manner. Now, typically we look at behavior over time, energy consumption across cycles, efficiency under load, all of these things that we've been doing for a really long time. Most of them were applicable to appliances, wherein you can see AC's behavior, power consumption over time varies, and that's something we could really drill down into. And across the testing, we came across several interesting insights, which I'd like to share with you. This is very short and sweet. This is for washing machines. Now, typically, when you look at a parameter, we assume more is better. If you get more of processor speed, it's better. If you get more of battery life, it's better. But sometimes it's just part of the story. Now, in this graph, we are looking at RPMs. Now, this is the rotations per minute of the tumbler inside a washing machine. Now, most of the premium devices, they will remain between 1300 to 700 RPM.
Now, you assume going more is better. What we found is it's a mix of the way the water action happens within the washing machine as well as the RPM. So you can have really good cleaning at 700 RPM as well. Now, we saw some of the very premium devices clocking it at 700 RPM, but giving us tremendous cleaning results. Now, when we plot price against RPM, we can see that paying more does not necessarily mean that you're getting a proportionate increase in spin speed, or more importantly, a higher RPM. Automatically giving you better cleaning. Now, cleaning performance depends on all the other factors that I spoke of. So instead of taking RPM as a pure proxy for performance, we started looking at things in a more holistic manner. Now, this graph is more about the feature availability across brands. Now, from a market perspective, this looks quite different. Rather than measuring a single performance metric, we wanted to understand what consumers actually gain as they go up through different price bands. Now, some features become very common across the category, while others remain concentrated towards the premium segment. What is useful here is identifying which features genuinely differentiate a higher priced product and which have effectively become standard across the category. This also helps us separate meaningful functionality from feature list inflation, that's just packing in features for the sake of it. A washing machine may advertise a long list of modes or smart capabilities, but what matters is whether those features materially affect convenience, wash performance, efficiency, and the ownership experience. In this next graph, we are looking at water purifiers. Now, with water purifiers, evaluating the initial purchase tells us only a part of the story. Filters and other consumables need to be replaced periodically, so the economics of the product change considerably once we look beyond the day one purchase. On one axis, we have the purification power index. Now, this is something we had to cook up because we were looking at a lot of filtration stages, different ways in the water TDS levels were being measured. So instead of looking at 10 different parameters that are all over the place, we decided to combine them and come up with a unified score, which we are calling Purified Power Index. And we plotted that against the total cost of ownership over time. And this gives us a more holistic view of the overall expenditure that any consumer has to go over a 2-year period, 3-year period, or 4-year period, whatever. In the next graph, we're looking at a similar situation, the TCO, total cost of ownership, with security cameras. Again, security cameras might be purchased at 4,500 or something that's super cheap. It looks very inexpensive, but many of its useful functions can depend on an ongoing cloud subscription. Over 5 years, those recurring charges can become significantly larger than the original hardware cost. So our evaluation looks at the price of the camera itself, but we also factor in the overall expenditure that the cloud plan comes with and what functions it enables. That can completely change the value proposition. 2 cameras with similar upfront prices, that you can see in the first 3 columns, are available locally, but once you factor in the subscription rates, they just scale differently over a 5-year period. Now, this is a very important metric that we'd like to bring to the Indian consumer so that they can make a more smarter purchase. Similarly, this is a specification that you see on the camera, wherein it gives you something called a field of view. Field of view tells you how much of the area you can see. But there are more factors in play, like where the sensor field of view has been stated or the overall element field of view has been stated. How the processor or the software is factoring that. With security cameras, what we did is we made some of our reviewers stand up with a measuring scale outside, and we peeked through it to see even if 2 devices claim the exact same field of view, they could have drastically different views of the actual scene in front of you. That is something we wanted to highlight over here. And the last graph before I leave you. This is one of the most time-consuming tests that we have. It's just a factor of the fun we have while we test devices. This is where our reviewers were going through different gaming scenarios on TVs. We are looking at SDR, standard range of the light that you get to see, contrast change. And then we're looking at HDR. And this sort of emulates the different conditions in which a person will actually use that screen at home.
whether it's watching the TV during the day, at night, gaming, all of those experiences factor in together. And we can see that devices might be very similarly scored, but sometimes this 0.10 is what differentiates a winner from the second best, and that's where we end up giving the Digit India's Top Appliance Awards. Thank you for that for your patience over that very short presentation. On to my colleagues. Thank you, Rohit sir. Thank you, Mithun. That really sets the bar for the evening. So there you have it. Now you know why tonight's winners are the absolute best in their categories. Before we move into the celebrations tonight, we have someone with us whose presence truly elevates this evening. It's a privilege for everyone at Times Network to welcome a distinguished guest. Ladies and gentlemen, please join us in extending a very warm welcome to our guest of honor, Shri Brijesh Pathak, Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh. डिजिट इंडिया टॉप अप्लायंसेस अवार्ड 2026 के भव्य एवं गरिमामय समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हैं। भारत सरकार में माननीय मंत्री, हमारे पुराने मित्र आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, सीईओ आदरणीय रोहित चड्ढा जी, मैनेजिंग एडिटर आदरणीय शमशेर सिंह जी, नेशनल रेवेन्यू हेड आदरणीय मारुति इंदौरिया जी, डिजिटल बिजनेस हेड आदरणीय मानस तिवारी जी, उपस्थित सभी स्टेक होल्डर्स, भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, आज एक हम सब विशेष प्रकार के कार्यक्रम में एकत्र हुए हैं। प्रतिदिन दैनिक जीवन में जिन संसाधनों का उपयोग हम करते हैं उनकी गुणवत्ता कैसी होगी, मार्केट में हम जाकर के कौन से प्रोडक्ट को खरीदें, उसके लिए हमको स्वयं सर्च करना पड़ता है मार्केट में जाकर के। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पर डिजिट मैगजीन ने एक बेहतर प्लेटफार्म लोगों को उपलब्ध कराया पूरे भारतवर्ष के, कि उनको बहुत मार्केट में जाकर के मेहनत न करना पड़े, केवल मैगजीन देख करके वो तय कर सकें कि कौन सा प्रोडक्ट बेहतर है। और ये कस्टमर्स के लिए तो अच्छा है ही है, उन सभी निर्माताओं के लिए भी अच्छा है कि वो बेहतर परंपरागत टेक्निक का उपयोग भी करें और आधुनिकता की इस दौड़ में एक दूसरे को देखते हुए आगे निकलें और लगातार अच्छे से अच्छा उपाय करते रहें। मैं कार्यक्रम की सफलता के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और जितने भी स्टेक होल्डर्स अपने विभिन्न कंपनियों से पधारे हैं, जिनके अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं, बहुत बहुत आभार करता हूं। मैं अपने सभी प्रोमोटर्स का, सभी का मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। हम सब अच्छी तरह जानते हैं जिस आधुनिकता की दौड़ में हम चल रहे हैं, नित्य नए प्रोडक्ट्स आते हैं। हमें अच्छी तरह याद है जब एसी का उपयोग शुरू हुआ, विंडो एसी आया, फिर स्प्लिट एसी आया। उस जमाने में एसी का दाम इतना अधिक था और वेट इतना अधिक था कि सब लोगों को एफोर्ड करने की मुश्किल आती थी। शहरों में था, धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गया। तो आज मैं उत्तर प्रदेश के लिहाज से कह सकता हूं, पूरे भारतवर्ष के लिहाज से कह सकता हूं कि शायद ही कोई गांव हो जहां पर एसी पहुंच न गया हो। आप जाकर के उत्तर प्रदेश के सभी गांव में देख सकते हैं। इवन देन छोटे छोटे जो विलेज हैं जहां पर ग्राम प्रधान चुना जाता है, उन गांव में भी आपको एसी चलता हुआ दिख जाएगा। और टीवी का तो बात ही छोड़ दीजिए, टीवी तो आप सबके घरों में टीवी पाएंगे। होम अप्लायंसेज के बारे में आपने दिखाया, जैसे वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन अब उच्च वर्गीय घरों से निकल करके मध्यम वर्गीय और छोटे छोटे घरों में पहुंच गई है। वॉशिंग मशीन के साथ जितने भी आप देखेंगे, चाहे मिक्सी है, ओवन है, हर प्रोडक्ट आपको सभी घरों में मिल जाएगा। ऐसे समय में बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि कौन सा प्रोडक्ट हम लें जो लंबे समय तक हमारे घर में उपयोग आए।
सबसे बड़ी बात इस समय मैं अपने जो निर्माता बंधु एकत्र हैं उनसे कहना चाहता हूं, निर्माता हैं, आपको गुणवत्ता की पहचान कराने के लिए डिजिट मैगजीन के अधिकारीगण हैं और हम लोग भी हैं। मैं अपने आप को कस्टमर की तरफ से प्रतिनिधि मानता हूं। यहां पर मैं एज ए मिनिस्टर नहीं हूं, मैं एज ए कस्टमर्स के प्रतिनिधि के रूप में यहां आया हूं। जो उनकी दुश्वारियां मैं झेलता हूं, ग्रामीण अंचल से लेकर के शहर तक, उनकी कुछ बातें आप लोगों से मैं करूंगा। आप लोग सहमत है ना? भाई कंपनी वाले बताएं ना, मैं गांव से आया हूं, ये मान के चलिए आप। देखो 2-3 बातें हम करेंगे आपसे। जैसे फ्रिज आप बनाते हो, फ्रिज बहुत अच्छा है, धीरे धीरे उसका आकार बड़ा कर दिया आपने, डब्बे अलग कर दिए कि सब्जी अलग रखेंगे, पीने का पानी अलग रखेंगे, खाने का सामान अलग रखेंगे, बर्फ जमाने का केबिन अलग करेंगे। लेकिन ये बदलाव कब तक होगा? मेरी बात समझ रहे नहीं आप? अब गरीब आदमी फ्रिज एक बार लेता है, मध्यम वर्गीय आदमी एक बार ले लिया तो कम से कम 20 बरस तो उसका चले। बताओ भैया, बोलो भैया ना आप लोग। तो आप तो 5 बरस में बदल दे रहे हो। हम पुराने फ्रिज का करें क्या? या तो आप उसका फ्रिज को बाई बैक करो, कोई ऐसा रास्ता निकालो, उसको आधुनिक बना करके हमको दो। ठीक है ना भैया? बोलो। फिर कंप्रेसर की बड़ी चुनौती है। अब कंप्रेसर एक आदमी बना रहा है, अब कंप्रेसर में फ्रीहान गैस पड़ेगी कि अमोनिया पड़ेगी? अब कोई अमोनिया डाल रहा है, कोई फ्रीहान डाल रहा है। अब उसको देखो आप, अब कंप्रेसर के नीचे जो पानी टपक रहा है, अब हम तो हेल्थ मिनिस्टर, उसमें डेंगू मच्छर आता है। अब उस पानी का इंतजाम आप कुछ करो। हमें चुनौती क्या है कि हम डेंगू को समाप्त करने के लिए अभियान चलाते हैं। अब घर घर जाकर के दस्तक बजा रहे, फ्रिज दिखाओ, एसी दिखाओ, और डेंगू का मच्छर साफ पानी में ही पनपता है, वो गंदे में नहीं होता है और दिन में ही काटता है। और डेंगू का जो मेल मच्छर है वो नुकसान नहीं करता, फीमेल मच्छर ही काटता है। आप पता करो, रिसर्च करो। हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह बैठे हैं, आप तो मेडिकल प्रोफेशन से आते हैं। तो समस्या ये कि ये भी तो आप ध्यान दो कि उसमें मच्छर न पनपे, उसका पानी का कुछ इंतजाम करो। और एसी में आप आ जाओ। एसी में आप पहले था 16 डिग्री 18 डिग्री पे लोग सोते थे, लेकिन अब तो 24 डिग्री की बात हो रही सबकी कि नहीं? बताओ जरा आप लोग, बताओ जरा, सब लोग सहमत हो हमारी बात से ना? अब उसमें ऐसा कुछ चलना चाहिए कि एसी 16 डिग्री पर आधा घंटा चले, जब हम घर में पहुंचे आधा घंटा 16 डिग्री अपने आप 24 पर आ जाए। ऐसा कुछ कर सकते हैं? होता क्या, रात में कोई उठना नहीं चाहता, आलस इतना बढ़ गया है, कौन जाके रिमोट उठा करके उसको फिर 24 पे 22 पे करे? यही समस्या है कि नहीं? बताइए आप लोगों के सामने। कुछ तो बोलो, भाषण थोड़ी आए और बातचीत करने के लिए आए। ये सहमत है कि नहीं? अगर रात में हमको वॉशरूम जाना पड़ा तब तो हमने एसी का 22 पे 24 पे कर दिया, नहीं तो रजाई तान ली अपना, चलो यार सुबह हो जाएगा, कौन उठेगा? आलस तो बड़ा है। मन और आत्मा में युद्ध चलता रहता राउंड द क्लॉक, रात में भी चलता है। कभी सोचते वॉशरूम जाएं, कहते 2 घंटा बचा, 6 बजे उठेंगे तब करेंगे। एसी कौन छोड़ेगा? ये युद्ध चलता रहता है, हर समय मानव जीवन युद्ध में रहता है। तो एसी का ये ऐसा कुछ इंतजाम करो कि ऑटोमेटिक वो 16 पर आधा घंटा चले, फिर चला जाए। बच्चे लगातार देखो, हमें याद है अच्छी तरह, जब हम हाई स्कूल में थे गांव में भाई साहब, तो रजाई को जाड़े में हम लोग निकालते थे, गर्मी में स्टील के बक्से में बंद कर देते थे। बोलो भैया, सही है कि नहीं? बोलो भैया। अब दिल्ली हो चाहे बंबई हो चाहे गांव हो, वो जाड़े में भी तो रजाई ओढ़ते ही है, गर्मी में भी ओढ़ते हैं। ओढ़ते कि नहीं ओढ़ते? और हम आप लोगों ने ऐसा कर दिया, सभी कंपनी वालों ने प्रकृति को चुनौती दे दी। हम लोग जब थे तो जाड़ा गर्मी बरसात देखते थे, अब जाड़े में भी 16 डिग्री है और गर्मी में तो 16 डिग्री है ही है। बाहर 48 डिग्री है, हम 16 डिग्री में सो रहे हैं चाप के कंबल लेकर के। तो ऐसा कुछ करना चाहिए कि हम लोग प्रकृति को भी समन्वय बना करके चले। दूसरा, जो एसी का पानी टपकता है, नया एसी तो ठीक है, लेकिन सबको बुलाना पड़ता कि नहीं? सब लोग बताना, आप लोग सब बनाने वाले लोग हो, सब लोग बुलाते हो कि नहीं बुलाते हो? एसी का पानी टपकता है कि नहीं टपकता है? बताते कि नहीं आप लोग? आप लोग तो कंपनी के मालिक लोग हो। उसका क्या करना है? हम तो आपके कस्टमर की तरह बोल रहे हैं ना, हमको आपने प्लेटफॉर्म दिया, तो कस्टमर की दुश्वारियां आप सुधारोगे तो सेल भी बढ़ेगी और आपका काम भी आगे बढ़ेगा। और दूसरा क्या, फालतू में मरम्मत का पैसा नहीं जाएगा। वो मिस्त्री आएगा तो घर का बेडरूम गंदा करता है, फिर वो पूरा सर्विस करेगा, पूरा व्यवस्था करेगा, और पानी के अगर खोदा खादी किया तो आपको टेंशन रहेगा, बुलाओ मिस्त्री को, प्लास्टर कराओ, टाइल ठीक कराओ। बोलो भैया, ठीक है ना? तो इसका पानी का कुछ ऐसा इंतजाम करो कि पानी टपके ना। ऐसा कर सकते हैं, कोई इंजीनियर टेक्नोलॉजी तलाशे कि पानी उसका बाहर लीक ना करे।
ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं? भाई एलजी साहब कहां गए हैं? आए हैं? अच्छा, एलजी के साथ देखिए तमाशा, जब तक ये लाइट गोल्ड स्टार रहा बिका नहीं। एलजी के आए सीईओ साहब नहीं आए? कोई कोरियन साहब आप हैं? जब तक लाइट गोल्ड स्टार रहा बिका नहीं, और जैसे एलजी हुआ बिक गया। हमारे एक मित्र हैं, जब तक असली नाम मेरे नहीं चल पाए, और जब उन नाम उन्होंने पलट दिया तो चल गए। हाँ भाई, पहले लाइट गोल्ड स्टार था, आपने लक्ष्मी गणेश किया तो चल गया। तो आपने सनातन संस्कृत को स्वीकार किया, एलजी के लिए ताली बजा दीजिए आप। हमारे लक्ष्मी गणेश को देखिए, हिंदुस्तान से निकाल करके कोरिया तक पहुंचा दिया। गजब है, आप सलूट करता हूं आपको कि हमारे लक्ष्मी गणेश को एलजी ने हिंदुस्तान से निकाल करके कोरिया तक पहुंचा दिया। अपने कोरियन भाइयों को सलूट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आपको। अब जैसे घर में आपने और क्या दिखाया, एयर प्यूरिफायर दिखाया आपने। अब जैसे हवा छानने की मशीन आपने बना दी, उसमें ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं। कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो कंप्लीट काम करे। हम लोग चलाते तो हैं, दिल्ली में एक्यूआई देखा 300 पार हुआ, चला दिया, लेकिन वो परमानेंट काम करे। जितने एयर प्यूरिफायर हम लोग लगाए हैं, मन पर एकदम खरे नहीं उतर रहे हैं। आप सब लोग बताओ ना, मेरी हम यहां भरो, आप लोग यूज करने वाले हो ना, बताओ ना भैया आप लोग। उसमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट बने कि राउंड द क्लॉक चले, तो उसका एक्यूआई हमारे कमरे का तो ठीक रहे। उसमें दिन में जैसे दरवाजा खोलते लाल लाइट जल जाती है। जलती है कि नहीं जलती है? बाथरूम खोलो तब भी लाल जलती है। जलती है कि नहीं, बताओ ना आप लोग। जलती है। तो बाथरूम में तो ऑलरेडी पोल्यूशन नहीं है, बाथरूम में धूल के कण कहां है, तो वो लाल लाइट क्यों जल रही है? तो उसको जब थोड़ा हमें और बेहतर बनाना होगा। जरूरत की चीजें हैं सब, और ढेर सारे सामान आपने दिखाए हैं। तो मिक्सी वगैरह जैसे चीजें हैं, ओवन है, उधर भी कुछ हम लोगों को ध्यान देना है। तो घर में सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया है। अब तो एक घर में हम गए भाई साहब, जितिन भाई साहब, वो उसके घर में घुसने के लिए अंगूठा लगाना पड़ रहा था, नहीं जा सकते आप। अब तो कुछ समय के बाद हम लोग पैंट शर्ट भी लगता रिमोट से पहनेंगे। इस ढंग से हम प्रगति कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, हम प्रगति करें, लेकिन अपने मूलभूत स्वभाव को हमें नहीं खोना है। जैसे हम खाना खाते हैं, फ्रिज में रखा हुआ खाना हम तभी खाएं, ये अपने इंडिया में नहीं चलेगा। फ्रिज में खाओ, हमारे सभी बहन भाई बैठे हैं, गर्म करके खाना। फ्रिज में कीटाणु पनपते हैं, जर्स पनपते, बीमारी पनपती है। और मैं चूंकि हेल्थ मिनिस्टर हूं तो अपनी बात कहकर बात समाप्त करूंगा। देखो, 90% बीमारियां हम बुला करके अपने घर में लाते हैं। 10% बीमारी तो पीछे से आती है, अनुसांगिक होती है, या किसी से हमने डिजीज ले लिया, किसी से हाथ मिला लिया। बाकी क्या है कि हमारा खान पान थोड़ा सुधरवाओ, सब लोग दिनचर्या सुधरवाओ, एक्सरसाइज करना है। हम जितने लोग बैठे हैं, हम अस्पतालों पर लोड क्यों बढ़ा रहे हैं? हमारे यहां चिंता सबसे अस्पताल खोलने को लेकर के है। हम बीमार न पड़े, इस पर चिंता क्यों नहीं हो रही है? 40 तक तो अच्छा है, क्यों तिवारी जी, चड्ढा जी, मानस जी कहां गए हमारे? हाँ, 40 तक तो अच्छा है। अभी क्या हो गया, कभी कभी हम लोग नोएडा भी देखते हैं ना, यूपी में आता है, तो कई लोग हमसे कहते हैं कि भैया हमारी जो पार्किंग थी एकदम लिफ्ट के पास में थी, और वहां आकर के दूसरा रख दिया और हमारी पार्किंग दूर कर दी, हमें 50 कदम चलना पड़ रहा है। अब चलना बंद हो गया है। सबको चलना चाहिए, फास्ट वॉक करना है, 40 मिनट कम से कम पसीना सबको निकालना है। सहमत है ना आप लोग? सहमत है कि नहीं? और दूसरा क्या है, खान पान हमें बढ़िया करना है, जो खान पान हमारे शरीर के लिए लागू है। जैसे मोटरसाइकिल हमने निर्णय लिया, जैसे अभी अपने रोहित जी ने नया गाड़ी खरीदा, तो नया गाड़ी खरीदने अगर रोज नहीं चलाएंगे तो 3 साल बाद मर्सिडीज भी आपको चलाने के लिए सर्विस सेंटर ले जाना पड़ेगा। या उसमें अगर पेट्रोल की जगह और कुछ डालेंगे, जैसे केरोसिन ऑयल डालेंगे, तो चलेगा, इंजन बैठ जाएगा। तो हम सब जितने बैठे, जो हमारे शरीर को अनुमन्य है वही खाना खाएं। सहमत है ना आप लोग? और ये जो रात में 2 बजे खाना मंगा रहे हैं लोग, ये बात ठीक नहीं है। हम लोग मतलब आपसे निवेदन करते हैं, आपके भाई हैं, आपने अवसर दिया तो मैं कहने का मंच पाया हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। देखो, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम दुनिया को जीत लेंगे। जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? हमारे पास बुद्धि, विवेक, कौशल है। भारत ने दुनिया को रास्ता दिखाने का काम किया है। केवल आज की बात नहीं है, पुरातन काल से हमारी संस्कृति देखिए। हमारे कौन लोग थे? कौटिल्य। अर्थशास्त्र न होता तो अर्थशास्त्र कौन बताता इकोनॉमिक्स को? अगर जीरो न होता तो डॉलर कितना भी महंगा हो जाए, जीरो न होता तो
99 से ऊपर जा ही नहीं पाता। बोलो आप लोग, जीरो किसने दिया? भारत ने दिया जीरो। पहले से हमारा सिक्का है दुनिया में, लेकिन आवश्यकता अपने मन को, शरीर को स्वस्थ रखने की है। अब जैसे खाद्य पदार्थ तो चर्चा हो गई, पेय पदार्थ में हमें वही लेना है जो अनुमन्य है शरीर में। अनुमन्यता समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? जैसे कोक, कोक मतलब दूसरी बात समझ गए ना? सीमित मात्रा में ठीक है, लेकिन शरीर को बचाना है, मन को स्वस्थ रखना है, एक्सरसाइज करना है, और दुनिया जीतने के लिए हमें खड़ा होना है। और हम जीतेंगे, विपरीत परिस्थितियों में जीतेंगे। और कोई पहली बात नहीं, भारत पर सांस्कृतिक हमले हुए, सामरिक हमले हुए, हमने हमेशा जीत दर्ज की। आप इतिहास उठा के देखो, हजारों साल पुराना हमारा इतिहास है। सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो आप पढ़ो, कब से हमले हुए, लेकिन कोई अक्षुण्ण है भारत की सनातन संस्कृति। हम हमेशा आगे रहेंगे। केवल यही निवेदन करना चाहता हूं, आधुनिकता के साथ अपनी संस्कृति को हम बचाए रखेंगे, सनातन संस्कृति को बचाए रखेंगे, और दुनिया के पैमाने पर भारत की चर्चा है। कृषि विज्ञान से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान तक में भारत ने लोहा मनवाया है। और सबसे बड़ी जो हमारे कंपनी के सीईओज बैठे हैं, देखिए भारत एक बड़ा मार्केट भी है। आप दुनिया में कुछ भी कराओगे, भारत में जो चीज सक्सेस है पूरी दुनिया में सक्सेस है। अगर उत्तर प्रदेश राज्य 25 करोड़ आबादी वाला राज्य है, उत्तर प्रदेश में जो चीज सक्सेस है पूरे भारत में सक्सेस है, जो भारत में सक्सेस है पूरी दुनिया में सक्सेस है। सही है कि नहीं बताओ जरा हमको भैया, सही है ना? जैसे आपके कोरियन प्रोडक्ट्स भारत में आसानी से स्वीकार किए जाते हैं, तो इस प्रकार से ढेर सारे प्रोडक्ट्स और भी आप सबके बीच में आए हैं। टेलीविजन की दुनिया में तो इतना बदलाव हुआ है कि हम देखते देखते हमारी आंखों से क्या न क्या हो गया। पहले याद करिए, टीवी आया तो आधा घंटा उसको गर्म करना पड़ता था, याद है आपको? उसमें वाल्व लगे रहते थे, जब गर्म हो जाते थे तब ऑन होता था। रेडियो भी ऐसे था। फिर उसमें शटर लग गया, शटर लगने के बाद फिर टीवी रंगीन आया, कोणार्क टीवी आया था, उड़ीसा सरकार का था, याद है आप लोगों को? कोई पुराना आदमी बता पाएगा? दादा आपको याद है कोणार्क टीवी आया था? रंगीन टीवी पहला कोणार्क था, फिर अब ट्रान ने बनाया, फिर धीरे धीरे देखिए अब तो कितने टीवी आ गए। अब टीवी धीरे धीरे उसमें सेटअप बॉक्स नहीं होता था, एंटीना लगता था। एक आदमी छत पे रहता था, झांक के बताता आया नहीं आया, एक भाई ऊपर एक भाई नीचे। अब सेटअप बॉक्स आ गया, टाटा स्काई और ढेर सारे सेटअप बॉक्स, वीडियोकॉन और आपका एयरटेल, ढेर सारे आए। अब उसके लिए भी देखिए आप लोगों ने खतरे घंटी बजा दी। अब तो इनबिल्ट आपने चैनल दे दिए, स्मार्ट टीवी आ गए। अब उस टीवी सब बेकार हो रहे हैं, स्मार्ट टीवी आ गए। धीरे धीरे बदलाव के दौर से हम सब गुजर रहे हैं। मैं आपके कार्यक्रम की सफलता की शुभकामनाएं देता हूं। मैंने आपके कंज्यूमर की बातें आपके समक्ष रखी हैं, हमने सरकार का पक्ष नहीं रखा है। सरकार की तरफ से आपको जो भी सहूलियतें चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार आपके साथ हमेशा खड़ी है। आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल बनाने की कंपनी सैमसंग है, और सैमसंग सर्वाधिक स्क्रीन जहां बनाती है वो उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश की स्क्रीन पूरी दुनिया में जाती है सैमसंग की। और उत्तर प्रदेश राज्य, मैं कह सकता हूं कि औद्योगिक निवेश के लिए भारतवर्ष में सबसे बेहतर डेस्टिनेशन बनकर के उभरा है। उत्तर प्रदेश के बारे में 2-3 बातें कहकर बात समाप्त करूंगा। हमारे पास 75 जिलों में 4 लेन कनेक्टिविटी है। सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज आज उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश में है। आज हमारे पास 17 एयरपोर्ट पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में 21 एयरपोर्ट होंगे। एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेवर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आप सबको लोकार्पित किया है। हमारे यहाँ बिजली राउंड द क्लॉक हम सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स देते हैं। गाँव में हम 18 से 16 घंटे बत्ती देते हैं। किसानों को सिंचाई के लिए बिजली फ्री है। हमारे पास 17 से 47 से 17 तक हमारे पास मात्र 40 मेडिकल कॉलेज थे। आज हमारे पास 83 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम नंबर 1 पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का बहुत अच्छा हुआ। पहले लोग कहते उत्तर प्रदेश का कुछ नहीं हो सकता। आज उत्तर प्रदेश में बदमाश पूरी तरह से साफ हो गए हैं। आज औद्योगिक निवेश का बेहतर माहौल बना है। और सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने क्या थी? इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास, इन्वेस्टर समिट के लिए हमारे पास लोग आए। हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की। मुझे कहने में गर्व है कि हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना मार्गदर्शन देके उत्तर प्रदेश राज्य को पूरे देश में बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला राज्य बनाने में आशीर्वाद देकर के हम सब ने सफलता हासिल की है। जीएसटी कनेक्शन में हम पूरे भारतवर्ष में नंबर 2 पर हैं। पहले हमारा नंबर बहुत नीचे था,
महाराष्ट्र हमसे आगे है और जिस ढंग से आप सबका आशीर्वाद उत्तर प्रदेश को मिल रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिल रहा है, शीघ्र ही हम नंबर 1 पर जीएसटी कलेक्शन में आएंगे। आज दूध उत्पादन में पूरे भारत में हम नंबर 1 पर हैं, गेहूं उत्पादन में पूरे भारत में नंबर 1 पर हैं, चीनी उत्पादन में पूरे भारत में नंबर 1 पर हैं और धीरे धीरे हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश राज्य अपने नेता माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं और उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से कहता हूं कहीं भी कोई आवश्यकता होगी हम हमेशा आपके साथ हाथ जोड़ करके खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. I would like to request you to please join us back on the stage for the felicitation of first set of awards. Also request Rohit sir to please come up on the stage to facilitate first set of awards. All right, guys. First award of the night. Deep breath, everyone. The DETA for best water purifier goes to Attenberg. Can we have somebody? Thank you. DETA for best water purifier value for money goes to Live Pure. The DETA for most reliable water purifier goes to Native. DETA for best air purifier goes to LG. The DETA for best air purifier value the best air purifier for value for money goes to Cubo. DETA for design innovation air purifier goes to Dyson. The DETA for best double door refrigerator goes to Bosch. DETA for best double door refrigerator value for money goes to Samsung.
The DITA for most innovative double door refrigerator goes to Liber. DITA for best front load washing machine goes to LG. And guys, the last award in this category, the best front load washing machine value for money goes to Bosch. With that, I would like to request Mr. Shamsher Singh, Managing Editor, Times Now Nav Bharat, to come on the stage so that we can offer Shri Brijesh Pathak ji a token of appreciation. All right, ladies and gentlemen, a big round of applause as we welcome our chief guest for the evening to the stage, Dr. Jitendra Singh, Union Minister of Science and Technology, Earth Sciences, and Minister of State for PMO, Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Atomic Energy, and Department of Space. Dr. Jitendra Singh joins us for this evening not as a formal address, but for an in-conversation session with Priya Singh, Senior Producer, Times Network. Over to you, Priya. Thank you. थैंक यू। तो जोरदार तालियों से एक बार फिर स्वागत कीजिए। हमारे बीच में यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह मौजूद हैं और आज स्पेस टेक्नोलॉजी, चाहे हम साइंस की बात करें, इनोवेशन की हम बात लगातार कर रहे हैं। चंद्रयान से गगनयान तक का सफर हमने तय किया है स्पेस में, क्योंकि चाहे हम टेक्नोलॉजी की बात कर लें या फिर आगे क्या कुछ हम इनोवेट करने वाले हैं, रिसर्च को लेकर के, डीप टेक को लेकर के, इन सारी बातों पर हम आज एक बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से उनका नजरिया भी जानेंगे। और क्योंकि पीएमओ में है ये और लंबे समय से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनके साथ मिलकर के इन तमाम क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और सबसे पहले इस सेशन की शुरुआत मैं आपसे कर रही हूँ। सबसे पहला सवाल सर आपसे, भारत को दुनिया का, क्योंकि आज यहाँ पर इतने सारे टेक डेवलपर्स भी मौजूद हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद हैं यहाँ पर, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए, क्योंकि विकसित भारत का सपना दिखाया आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने,
तो उनके नेतृत्व में जो पहला कदम है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस को लेकर के इस इंडस्ट्री की भूमिका को आप कितना देखते हैं कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है और क्या यहाँ पर चैलेंजेस हैं? सबसे पहले तो धन्यवाद प्रिया जी। और मुझे लगता है कि आपसे भी कोई 6-8 बरस के बाद मिलना हुआ। जी मुझे याद है कि असम के चुनाव में हमारे साथ थी, और ये वाला चुनाव नहीं, उससे पहले शायद। जी। और साथ ही साथ आयोजकों का भी इस कार्यक्रम का मुझे हिस्सा बनाया, और डिजिटल अप्लायंस अवार्ड विजेताओं को भी बधाई। अब जैसे आपने पूछा कि हब, मैन्युफैक्चरिंग हब कब बनेगा, वो कह रहा है कि बड़ी तेज रफ्तार से तरक्की हो रही है मैन्युफैक्चरिंग में भी, टेक्नोलॉजी में भी। और अनलाइक आई थिंक अ डेकेड एंड हाफ बैक, आज हम उसी स्तर पर हैं जिस स्तर पर दुनिया का कोई और देश है। उदाहरण के तौर पर, जैसे अभी ब्रजेश जी बात कर रहे थे टेलीविजन की, तो हमारे देश में जब टेलीविजन आया तो लगभग 15-20 बरस गुजर चुके थे। अमेरिका में लोग 1950 के दशक में टेलीविजन देखते थे। यहाँ पहली बार दिल्ली में भी चित्रहार हमें 1970 में देखने को मिला, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट। इसी तरह आईटी में भी हम बाद में, कंप्यूटर भी हमारे यहाँ देर से पहुंचा, मोबाइल भी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज वी आर अमंग दी फर्स्ट फ्यू कंट्रीज हु आर इनटू क्वांटम टेक्नोलॉजी। बहुत कम देश हैं जो क्वांटम टेक्नोलॉजी के साथ प्रयोग कर रहे हैं। बहुत कम देश हैं जो अंतरिक्ष में, बल्कि हम बहुत तरह से अंतरिक्ष से बाकी देशों से हमने प्रगति नहीं की है, बल्कि बाकी देशों के लिए बहुत सारे वी हैव ड्रॉप्ड क्यूज। फॉर इंस्टेंस, चाहे अमेरिका चांद की धरती पर 1969 पे लैंड हुए, नील आर्मस्ट्रांग, वहां पे उन्होंने, बीबीसी ने फिल्म बनाई, उन्होंने थोड़ा टहल पोशी की, और एक बड़ा उनका बहुत लोकप्रिय स्टेटमेंट था, 1 स्मॉल स्टेप फॉर मैन, जाइंट स्टेप फॉर मैनकाइंड। लेकिन आगे पीछे पानी उनको नजर नहीं आया। वो हमारा चंद्रयान गया और पानी के होने का वहां से प्रमाण लेकर आया, H2O मॉलिक्यूल्स। यानी हमारे यहाँ ह्यूमन टैलेंट की कमी ना थी, मानवीय साधनों की कमी ना थी, परंतु शायद उस तरह का वातावरण नहीं था। वो जो अनुकूलता नीति निर्धारकों की ओर से अपेक्षित होती है, या राजनीतिक नेतृत्व की ओर से होती है, पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन की तरफ से होती है, वो ना थी। वो मोदी जी के आने के बाद हुआ। अब हम भी वही स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रहे हैं जो दुनिया भर में होती है। अब हमारे मापदंड, हमारे बेंचमार्क्स भी ग्लोबल हैं, और यही कारण है कि आज दूसरे देश भी बहुत सारे पहलुओं में हमसे सीख लेते हैं। अब हुआ क्या है दिक्कत, जैसे अभी आप भाषण सुन रहे थे, जो भी इससे पहले वक्ता थे, माइंडसेट नहीं बदल रहा। टेक्नोलॉजी में हम बहुत तेजी से बदल रहे हैं, उसी रफ्तार से जिस तरह से शायद अमेरिका। अब क्यों हम 16 डिग्री के टेम्परेचर पे एसी लगाते हैं जैसे कहा जा रहा है? क्योंकि वी हैव कम आउट आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग प्रोटेक्टेड फेस ऑफ बीइंग हैव नॉट्स। जुगाड़ करो, जो मिल रहा है खा जाओ। खाना खाना तो एक ही बात, 8-10 रोटियां खा लो, दिन को पता नहीं मिले कि ना मिले। तो एसी लगाया तो जितना कम से कम टेम्परेचर है उतना लगाना है। भले ही आपको चिकित्सक कहते हो कि 24 डिग्री लगाना, और दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वी आर स्टिल गेटिंग यूज्ड टू दिस रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन विच द कंट्री इज गोइंग थ्रू, और उसमें हमें समय लग रहा है। और इतनी तेज रफ्तार टेक्नोलॉजी बदल रही है कि इफ यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर टुमारो, व्हेन टुमारो हैपेंस यू रियलाइज इट वाज यस्टरडेज। यानी हर डोमेन में, हर क्षेत्र में। तो मुझे लगता है कि सबसे साथ साथ जो मैन्युफैक्चरिंग हमारे क्षेत्र में जो हमारे साथी लगे हैं, ये दूसरे बायोटेक्नोलॉजी अपकमिंग, वैसे अब आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग से शिफ्ट हो जाएगा इकोनॉमी। सॉरी, आई एम नॉट डिस्करेजिंग द मैन्युफैक्चरर्स ओवर हियर, बट देयर इज अ वर्ल्ड वाइड व्यू even among the economists that there's going to be a gradual paradigm shift of economy from manufacturing into other kinds of domains like recycling of economy, circular economy, lab economy, biotechnology. और ये भी कहा जाता है कि जैसे फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज वाटर एंड स्टीम पावर, इंजन आए मोटर कार का, रेलगाड़ी का। सेकंड वाज इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड वाज आईटी, और मैन्युफैक्चरिंग भी चलता रहा। द फोर्थ इज गोइंग टू बी एआई ड्रिवन, बायोटेक्नोलॉजी ड्रिवन। और शुरू भी हो गया हमारे बंगलौर से 1-2 स्टार्टअप्स के, तो एक्सपोर्ट क्वालिटी जा रहा है। एनिमल फ्री मिल्क, इतने सारे पशु कहाँ पालेंगे आप, तो कैसे होगा उसका उन्होंने
विकल्प दिया तो दुनिया भर ने उसको अपनाया है। तो इस तेज रफ्तार से हम बदल रहे हैं। एंड फॉर्चुनेटली अनलाइक पहले, जैसे मैंने कहा कि पिछला अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आईटी था तो हमें आईटी के बीच में घुसने में समय लगा, अब ऐसा नहीं है। अब बायोटेक्नोलॉजी अगर आने वाले समय का आईटी रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, तो वी आर ऑलरेडी इनटू इट। वी आर ऑन द वेरी फ्यू कंट्रीज व्हिच हैव अ डेडिकेटेड बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी एंड दैट हैज बीन प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट, जो बायो E3 कहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, फॉर एम्प्लॉयमेंट, फॉर एनवायरनमेंट। तो कहने का, और अब आने वाले समय में जो आपके मेडिकल साइंस होगी वो भी बायोटेक्नोलॉजी ड्रिवन हो जाएगी, जो आपकी प्लांट कल्टीवेशन है वो भी बायोटेक्नोलॉजी ड्रिवन हो जाएगी, जो आपके फूड इंडस्ट्री है वो भी। और हम उसमें पहले से ही आ चुके हैं, सिर्फ अब हमें अपना माइंडसेट बदलने की आवश्यकता है। जैसा आपने कहा कि हम टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं, किसी चीज़ को अडाप्ट करते हैं, और कल की बात होती है, अगले दिन हम जब सुबह उठते हैं तो हमें पता चलता है कि हम तो पीछे रह गए, ये चीज़ और बदल गई, और उसी बदलाव को लेकर के भी अब यहाँ बात भी हो रही थी। तो इस दिशा में क्या सरकार के पास प्लान्स हैं, क्या विजन है, किस तरीके से हम काम कर रहे हैं? और आपने अभी खुद कहा कि आईटी सेक्टर में भारत की गति पहले की जो सरकार रही उस वक्त की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि तब ये सब कुछ हमने देखा था, कमजोर थी, हम तैयार नहीं थे, उस रफ्तार के साथ हम आगे नहीं बढ़ पाए, जिसका हर्ष अभी हम सबके सामने है। लेकिन अब हम सिर्फ किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो क्षमता हमारे पास है कि हम उसका नेतृत्व कर रहे हैं। आप ठीक कह रही हैं। तो इसके लिए आपके पास क्या विजन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास? मुझे लगता है कि हमें समझने में ये देर लगी कि टू बी ग्लोबल यू हैव टू हैव द ग्लोबल थिंकिंग एंड ऑल्सो ग्लोबल स्ट्रैटेजी। हम थोड़ा गायबाना कैजुअल तरीके से चलते रहे। अब सुबह सैर करने निकलते हैं, अगर आप लोधी गार्डन, नेहरू पार्क, तो गायबाना कह देंगे, अरे साहब इसरो ने रॉकेट भेजा तो क्या किया, नासा ने तो 20 साल पहले भेजा था। अरे भाई साहब उनको पूछिए, नासा ने भेजा तो नासा ने सरकार का पैसा नहीं लिया। इट हार्डली डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट रिसोर्सेज। अभी हमने भी स्पेस को खोल दिया प्राइवेट सेक्टर के लिए 5-6 साल पहले, तो उसका नतीजा देखिए कि हमारी स्पेस इकोनॉमी वॉज ऑलमोस्ट डिसमल, यानी जिक्र करने लायक नहीं, नाम मात्र। आज वो बढ़कर के 5-6 बरस में $9 बिलियन हो गई, और इतनी तेज रफ्तार से बढ़ रही है कि अगर आप उसकी फ्यूचर प्रोजेक्शंस देखें तो 8-9 साल के भीतर 40-45 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। अर्थात हमारी जो ओवरऑल अर्थव्यवस्था रहेगी भारत की, उसमें स्पेस इकोनॉमी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और इसलिए मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूं, इसलिए कि वी हैव नाउ स्टार्टेड फॉलोइंग ग्लोबल स्ट्रेटेजीज। और यहां पर चूंकि प्राइवेट सेक्टर के सारे मित्र बैठे, वो जो स्केप्टिज्म था, जो खला थी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर की, उसको दूर करने का काम इस सरकार ने किया। मुझे लगता है वो बहुत बड़ा योगदान है। वी हैव टू लर्न टू वर्क टुगेदर, टू लिव टुगेदर। अभी क्या था कि पहले तो, एंड आई डोंट ब्लेम एनीबडी बिकॉज सोसाइटीज इवॉल्व ओवर सेंचुरीज। अभी हम तो 70-80 साल पुराना देश है आज़ादी के बाद। अगर कहीं इतिहास लिखा जाएगा तो 80 साल का तो फुट रोड भी नहीं बनता, युगों में लिखा जाता है, मौर्य युग, मुगल युग। तो हुआ क्या कि वी हैड कम आउट आफ्टर अबाउट 200 years ऑफ फ्यूडल पास्ट। तो हमारा माइंडसेट भी उस तरह का था कि हर चीज के लिए सरकार को देखो। हमारा वो धीरे धीरे उसमें जाने में, और मोदी जी के आने के बाद उस चीज को बदलने का एक कॉन्शियस एफर्ट भी किया गया। अब इसी तरह से न्यूक्लियर सेक्टर को अभी 8-10 महीने पहले ही उसको भी प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया गया। अब हुआ क्या है कि इस सरकार ने इतनी तेजी से प्राइवेट सेक्टर को या नॉन गवर्नमेंट सेक्टर को इन्वॉल्व करना शुरू किया है, क्योंकि मैं इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठता हूं, तो मैं उस दिन कह रहा था कि कभी कभी ऐसा लगता है कि सरकार बड़ी तेजी से खुलती जा रही है और आप उसके लिए तैयार नहीं है। अब उदाहरण के तौर पर अगर इस कमरे में मैं ये कहूं कि साहब मैन्युफैक्चरिंग बहुत हो गई, बहुत कर दी आपने, लेकिन हर बिजनेसमैन जो स्मार्ट बिजनेसमैन है थिंक्स ऑफ डाइवर्सिफाइंग। आप भी सोचेंगे कल हम क्या करें। अब देखिए जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस थे वो भी अब बायोटेक्नोलॉजी की तरफ आने लगे, वो भी अब क्लीन एनर्जी की तरफ आने लगे। तो अगर आपको आज मैं कह दूं कि साहब इस कमरे में बैठे हुए कितने सारे लोग हैं जो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में हमारा सहयोग करेंगे, तो आपको घर जाके सोचना पड़ेगा। वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड द फॉल्ट डजंट लाई विद यू। कहने का तात्पर्य है कि हमारे पास वक्त कम है। जब हमने 2047 का लक्ष्य रखा या हमने अपने लिए वो भौगोलिक भूमिका बनानी है ग्लोबल, एंड वी हैव टू, जैसे आपने ठीक कहा कि वो स्थिति नहीं कि वी आर नो लॉन्गर फॉलोअर्स, वी आर नाउ इन अ पोजीशन टू बेकन अदर्स टू फॉलो अस। अगर वो हमने अपनी
स्थिति बरकरार रखनी है तो हमें हर सेक्टर को खोलना भी होगा और प्राइवेट सेक्टर को भी साथ ही साथ अपने आप को तैयार करना होगा, और धीरे धीरे हो जाएगा। क्योंकि पहले हुआ क्या था कि कभी किसी की कल्पना नहीं थी, कभी किसी को गुमान नहीं था कि कल को सरकार कहेगी साहब न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने भी आप आ जाओ, या सरकार कल कहेगी कि आप रॉकेट बनाने आ जाओ। लेकिन इतनी क्षमता है इस देश में, इतना सामर्थ्य है, किसी देश में नहीं। 5 साल के भीतर एक हमारा स्टार्टअप ना केवल रॉकेट भेज रहा है ऊपर, बल्कि यूनिकॉर्न बन गया। $1 बिलियन देखते ही देखते। ये जो स्काई रूट अभी आपने देखा जी, 5-6 साल इसकी जो कामकाज की जो इसका जर्नी रहा है वो इतना ही रहा। तो क्षमता बहुत थी, लेकिन इनेबलिंग मिलियो नहीं था जो अब सरकार देने को तैयार है। नीति, टेक्नोलॉजी, स्किल और रिसर्च, इन चीजों के लिए जाने जाते हैं ये। और जो बातें अभी यहाँ पर इन्होंने कही है इसको इम्प्लीमेंट भी किया है, क्योंकि आज ये राजनीतिक मंच नहीं है तो राजनीति की बातें नहीं हो रही है। और जैसा कि शुरुआत में ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा, असम इलेक्शन में जब इनसे बात हुई थी तब उन्होंने एक चीज मुझे कहा था, जो कि असम में जिस तरीके के समीकरण बन रहे थे, हालांकि ये थोड़ा पॉलिटिकल एंगल है, उस वक्त डाउट था कि क्या पहली बार इस तरीके से बीजेपी आएगी और वो भी उस अलायंस के साथ। तो इनका ये जवाब था कि 10-11 साल पहले की बात है, मैं कह रहे नहीं सर, लास्ट इलेक्शन की बात है ये। तो पहली बार बीजेपी की सरकार आई थी। जी हाँ, तो तब इनका ये जवाब था कि मैं यहाँ पर हूँ और इस राज्य की जिम्मेदारी मेरे कंधे पे है और मैं ये करके दिखाऊंगा। और वाकई ऐतिहासिक दिन था जब इलेक्शन के रिजल्ट आए। तो 2047 के लिए मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे साथ में मौजूद है, जानना चाहूंगी, जब आप इस देश के नागरिक को ये सपने दिखा रहे हैं, विकसित भारत का लक्ष्य आपने तय कर लिया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा गेम चेंजर आपके नेतृत्व में क्या होने वाला है जो पीढ़ियां याद रखें? नहीं, ये मैं, हाँ आपने अच्छा कहा। तो आपकी बात से मुझे ख्याल आया, जो अभी मैं कुछ क्षण पहले कह रहा था कि माइंड सेट। अब देखिए, मिसाल के तौर पर ये है, अब ये हमारे हाथ में नया नया खिलौना आ गया। अब जैसे मैंने कहा ना कि हम कई वर्षों से हम जुगाड़ की दुनिया में रहे, जो मिल जाए ले लो, छोड़ना नहीं। एसी है तो 16 डिग्री पर, अब इसका पूरा इस्तेमाल हो रहा है। गलत हो रहा है, सही हो रहा है, वो कोई सोच नहीं रहा। लेकिन ये इतनी कमाल की चीज है जी। गांव से लोग आजकल बच्चे आईएएस कर रहे हैं, आईआईटी की परमिशनें ले रहे हैं। आप चौंक कर हैरान हो जाएंगी, क्योंकि आप भी महिला है। एक छोटी सी बच्ची मुझे मिली, 12वीं कक्षा से निकली थी, और एक आतंक प्रभावित छोटे से कस्बे से आती थी, और उसकी परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी ना थी। उसने आईआईटी जेईई क्लियर किया। तो मैं इन बच्चों से मिलता रहता हूँ, क्योंकि इन्हीं से सीखने को मिलता है। आई एम अ गुड लर्नर। तो मैंने उसको पूछा कि बेटे तूने तो कमाल कर दिया, घर परिवार में उस प्रकार की व्यवस्था नहीं, कहीं कोचिंग में नहीं जाना, कहीं कुछ नहीं करना, तो तुमने तो आईआईटी की सीट निकाल ली। तो जानते हो उसने क्या किया प्रिया जी? उसने अपने जेब से ये निकाला और मुझे कहती है कि अंकल 14 आवर्स 8 मंथ्स आईआईटी क्रैक, सभी कुछ इसमें है। कहती है 14 घंटे 8 महीने सर पे तेल डालकर इसके साथ जोड़ो, आईआईटी निकल जाएगा। यानी क्या कमाल का यंत्र हमें दिया। अब हमारे जमाने में ऐसा नहीं था। अब अगर हमें कोई थीसिस करना पड़ता तो हमारे गाइड कहते कि साहब जाओ वो किताब लाओ। किताब है तो इतनी महंगी होगा, हमें साहब नहीं इतनी तो अफोर्ड नहीं, तो कहाँ जाए? हाँ साहब वो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी मिलेगी। ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी एक बार गया मैं, तो बोले साहब वो है तो सही, लेकिन कलकत्ता का काउंसिलेट ऑफिस वो ले गया है, तो 3-4 महीने बाद आ जाएगा। जब तक आती थी उसे 4-4 लकीरें होती थी, एक कैंडिडेट ने नीले रंग की, एक लाल रंग की। आजकल तो इतना कोई, इस टेक्नोलॉजी ने, इट हैज डेमोक्रेटाइज्ड अपॉर्चुनिटीज, डेमोक्रेटाइज्ड एजुकेशन। और यही कारण है कि अभी स्टार्टअप्स की बात हो रही थी। अगर आज हमारे देश में 2,80,30,000 स्टार्टअप्स है और हम तीसरे दर्जे पे हैं दुनिया में, तो उसमें से 50-60% छोटे कस्बों से आते हैं। ये धारणा भी गलत है कि दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर से आते हैं। ये वो बच्चे हैं जिनको मालूम है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे, बड़ा फोकस है। तो लेकिन अभी हम भी वी आर स्टिल ट्राइंग टू ड्रॉ द ऑप्टिमम कि इसका क्या इस्तेमाल है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें माइंडसेट बदलना होगा धीरे धीरे, बिकॉज इतनी तेजी से एवोल्यूशन हो रहा है। उसके लिए हमें आपको तैयार करना होगा। मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती वो रहेगी। सर समय, क्योंकि मेरे पास ये मैसेज आ गया है कि इट्स टाइम्स अप। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन एक आखिरी सवाल मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगी। अभी मैंने आपसे पूछा
कि ऐसा कौन सा वो फैसला जो आप ले चुके हैं, जिसे आप आगे भी जिंदगी में हमेशा एक माइलस्टोन की तरह देखते हैं कि ये मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था और इसको जो मैंने फैसला लिया है आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी और जनहित में ये फैसला है। क्योंकि कई सरकारें आती हैं जाती हैं, फैसले होते हैं, कई बार फैसले बदल भी दिए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैसले होते हैं चाहे सरकारें बदल जाए लेकिन उस मिनिस्टर को हम हमेशा याद करते हैं कि उनके नेतृत्व में ये कदम उठाया गया था जो सबके हित में था। तो आपका क्या आप लेने वाले हैं ऐसा फैसला या ले चुके हैं, क्या है? बड़ी दिलचस्प बात है। वो एक दो फैसले जो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात और बताऊं आपकी बात से जोड़ते हुए कि अक्सर जब कोई सरकारी अधिकारी रिटायर हो जाता है या जो मंत्री नहीं रहता तो अपने पोते पोतियों नातियों को यही कह करके बोर करता है, कहानियां सुना के, मेरे जमाने में मैंने ये किया, मेरे जमाने में मैंने ये कानून लाया। लेकिन इस सरकार ने हमें कहने में ये गर्व रहेगा कि हमने लगभग 2000 कानून पुराने खत्म कर दिए। लाए नहीं, लोग तो गर्व महसूस करते हैं कि लाए, हमने खत्म किया। और उसमें बड़े बड़े ऐसे ऐसे कानून जो अंग्रेजों के जमाने के पड़े हुए थे, जो किसी ने कभी देखा ही नहीं था। और मुझे ये भी खुशी है कि जिन विभागों से मैं जुड़ा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के उनके सहयोग और उनके सपोर्ट से हमने बड़े क्रांतिकारी निर्णय लिए। जैसे उदाहरण के तौर पर महिलाओं के लिए क्या होता था, अगर कोई सिंगल डॉटर होती तो शी वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू फैमिली पेंशन ऑफ हर फादर इफ द फादर पास हुए। खत्म किया हमने वो कानून, क्योंकि अब जमाना बदल चुका है। इसी तरह से महिलाओं के लिए जो महिला कर्मचारी होती थी सरकारी, क्योंकि वो भी विभाग में देखता हूं पर्सनल, तो इट वॉज अज्यूम्ड दैट द नॉमिनी आफ्टर द डेथ of the woman employee would be the husband. उसको भी खत्म किया। She has now the choice to nominate. कई इस तरह के कानून, अच्छा अंग्रेज पुराने जमाने से चला रहा था कानून के, अगर कोई 10 वर्ष से पहले अपनी नौकरी से पहले अगर कोई इंतकाल कर जाए, मृत्यु हो जाए, तो उसकी फैमिली को पेंशन नहीं मिलता था। अब शायद उस जमाने में जरूरत होगी कि दैट वाज अ फ्यूडल स्टेट सर्विंग द एम्पायर। हम तो वेलफेयर स्टेट है, तो हमने कहा साहब 10 साल में ही तो सबसे ज्यादा जरूरत रहेगी कि उसकी तो इस तरह के हमने बहुत सारे कानून, बजाय इसके कि हम बाद में जाके कहें कि हमने ये कानून लाया, मुझे लगता है हमको ये कहना होगा इतने सारे हमने खत्म कर डाले। हाँ, गेस्टेड अफसर से दस्तखत करवाने। जब हम 10वीं कक्षा में पहुंचे 8वीं में, तो हमें यही नहीं मालूम था कि गेस्टेड अफसर दिखता कैसा है, 2 नाक होंगे, 4 कान होंगे, प्राणी कहाँ मिलेगा। और मेरे खुद का अपना तजुर्बा है, 11वीं कक्षा में मेरे से 5 रुपए ले गए साहब, और वो मेरे पास नहीं थे, किसी से दिलवाए कि साहब आप मुझे सर्टिफिकेट दे दीजिए, शाम तक मैं टेस्ट करके लाऊंगा। हमने आते ही 2 महीने के भीतर वो कानून समाप्त कर दिया 2014 में, और एक बहुत बड़ा पैगाम दिया देश को कि लुक नाउ दिस इज अ गवर्नमेंट विच कैन ट्रस्ट द यूथ ऑफ दिस कंट्री। तो अब हमको भी समय के साथ, और अगर बड़ा महत्वपूर्ण फैसला आपने देखना कि जो विकास की दृष्टि से, तो मुझे लगता है कि एक स्पेस को प्राइवेट सेक्टर के खोलने के लिए जो हमने 2020 में किया, और पिछले वर्ष जो हमने न्यूक्लियर सेक्टर को, तो ये ऐसे फैसले हैं जो जिसमें बड़ा साहस भी चाहिए, बड़ी निष्ठा भी चाहिए। एंड इट वाज पॉसिबल ओनली बिकॉज वी हैव अ प्राइम मिनिस्टर हु हैज द कैपेसिटी टू टेक आउट ऑफ बॉक्स डिसीजंस। और इन फैसलों के परिणाम स्वरूप हम दुनिया के प्रथम कतार के देशों में आकर के खड़े हो गए। थैंक यू सो मच। और सर, डिजिट की इस नई पहल को, जिस मंच पे हम मौजूद हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं? नहीं, मैं तो बधाई दूंगा। मेरे ख्याल से एक पहल भी है, और साथ ही साथ एक ही कमरे में अंडर कॉमन रूफ सभी स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करना एक विचार विमर्श का भी अवसर रहता है। बिकॉज आज के जमाने में व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू बी गुड लर्नर्स। तो मैं भी यहाँ आता हूँ तो सोचता हूँ कि कुछ सीख के जाऊँ, अगर नहीं सीखता तो मुझे भी लगता है साहब वक्त ज़ाया कर दिया 1 घंटा 1.5। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बच्चों के साथ बैठिए, तो बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और यहाँ पर जो हमारे इंडस्ट्री के लीडर्स बैठे हैं, उनसे हमें कई बार ऐसी चीज़ें समझ में आती हैं, क्योंकि जो दुश्वारियां धरती की हैं और जहां सरकार कुड बी ए फैसिलिटेटर। तो मैं चाहूँगा कि आप इसके बाद भी हमारे साथ संपर्क बना रहे, और आपके माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से जो संपर्क बना है वो भी एक बहुत बहुमूल्य रहेगा। आपको भी किसी अप्लायंस से कोई शिकायत है, कोई डिमांड है आपकी? वैसे तो अधिकतर अभी तक इंडस्ट्री के मन में डिमांड करने का स्वभाव है लेकिन मैं ये कहूंगा कि अब हमें ये सोच करके चलना है कि वी हैव टू कोलैबोरेट, एंड इट हैज टू बी एक्सटेंसिव कोलैबोरेशन। एक जमाना था जब प्राइवेट वाले समझते थे कि साहब सरकारी दफ्तरों में क्या जाना, वक्त ज़ाया होगा, वहाँ तो
रिश्वतखोरी है, ये है, वो है, और सरकारी अफसर भी सोचते थे कि साहब वहां तो ब्लैक मार्केटिंग है क्या, तो दैट स्केप्टिज्म इज ओवर। अब देखिए आप जैसे बस में बैठती हैं ना, तो आपको नहीं मालूम कि आपके साथ साधु बैठा है कि संत बैठा है, और यकदम बस का टायर पंचर हो जाता है, तो आपको ड्राइवर कहता है जी लगाइए धक्का, तो सब लगाते हैं। फिर आप ये नहीं कहते कि भाई तू ठग गया, या तू इफ यू आर अगर तू शैतान है तो तूने धक्का नहीं लगाना। देन यू एक्सपेक्ट एवरीबडी, क्योंकि आपको एक डेस्टिनेशन पहुंचना है। उस समय आप सबको कहते हैं हाँ भाई लगाओ जोर से धक्का, ड्राइवर जरा गाड़ी स्टार्ट कर सके। तो उसी स्थिति में हम हैं। अगर हमने अपने उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो हम जैसे भी हैं, जिस तरह के भी हैं, वी हैव टू लर्न फ्रॉम ईच अदर्स प्रैक्टिसेस, ऑल्सो अनलर्न व्हाट इज गुड और बैड बिटवीन अस, और एक साथ मिलकर हम जितनी सिनर्जाइज तरीके के साथ, जिसे कहते हैं होल ऑफ गवर्नमेंट प्लस होल ऑफ नेशन की अप्रोच के साथ चलेंगे, उतनी आसानी से हम उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। Thank you so much, sir. Thank you for joining us. Thank you so much. Thank you so much, Priya, for joining us. You can please take your seat and enjoy the rest of the evening. And Dr. Jitendra Singh, I would like to request you to please stay back on the stage. And I would like to request Mr. Rohit Chadda to join us at the stage to present the next set of awards. Dita for Best Mini LED TV goes to Hire. The Dita for the Best Mini LED TV Value for Money goes to Lumio. Dita for Best Budget TV goes to Selecor. The Dita for the Best Single Door Refrigerator goes to Samsung. The Dita for Best Single Door Refrigerator Value for Money goes to LG. The Dita for Excellence in Sustainability goes to SellSmart. Can we have somebody from the SellSmart team? The Dita for Excellence in Home Theatre goes... The Dita for Excellence in Home Entertainment goes to BenQ.
Data for excellence in home networking goes to TP-Link. The data for excellence in television goes to Xiaomi. The data for excellence in commercial refrigeration goes to Elan Pro. The data for excellence in home baking ovens goes to Unox. And the last set of awards goes to data for promising home entertainment brand goes to Lumio. Thank you so much, sir. I would like to request Mr. Samsher Singh to join us on the stage to present the Honorable Dr. Jitendra Singh for a token of appreciation. Casanova Gurgaon da gora chitta har to chitta har chitta swag dekho lagta hai jaise chitta har to chitta har chitta kadche foot ji look too good ji oi is package pe ho jandi hai kudiyon ki niyat hai kharab ji सच्चार थोब जी गावंडी मुंडा लजाव जी ओ सच्चा मैं Casanova Gurgaon da gora chitta har चित्ता swag देखो लगता है जैसे चिट्टा har चित्ता कड़छे फुट जी look too good जी ओ इस पैकेज
What a beautiful audience! What a beautiful audience! वाह, कितने प्यारे प्यारे लोग आए हुए हैं with Sir, beautiful minds. सर वो सब तो ठीक है, लेकिन आप हैं कौन? मैं कौन? पूछ रहा है मैं बताऊंगा ना? ओह, मैं अपना नाम बताऊंगा तो उसको ना कांपने लग जाएगा. नहीं नहीं, मेरा नाम ठंड नहीं है. मेरा नाम है बलविंदर सिंह ब्रा, फेमस फ्रॉम राजौरी टू पीतमपुरा. अरे सर वो सब ठीक है, लेकिन आप यहाँ क्या करने आए हो? नहीं, मैं बाहर से जा रहा था. मैंने देखा अंदर शो चल रहा है, कुछ चल रहा है. मैंने कहा वाओ. वैसे यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ पर अवार्ड्स दिए जा रहे हैं. अवार्ड्स? ओह माय गॉड. आप गलत आ गए हैं कहीं सर. नहीं नहीं, मैं गलत नहीं आया. मेरा अवार्ड कहाँ है? सर यहाँ पर लोगों को नहीं, अप्लायंसेस को अवार्ड दिए जा रहे हैं. कोई बात नहीं, जिसको मर्जी. आप मेरे को अवार्ड दो ना. देखो देखो, सी दे दो आपको ऐसे जैसे यूथ आइकन ऑफ द ईयर, जेनजी इंस्पिरेशन ऑफ द सेंचुरी. सी कुछ भी. सर अरे लाइक आई सेड, यहाँ पर अप्लायंसेस को अवार्ड दिए जा रहे हैं. एप्पल क्या? वो क्या था? अरे सर रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सब. ओ नाइस. वॉशिंग मशीन को अवार्ड मिलेगा. इमेजिन, वॉशिंग मशीन वहां से चलती हुई आएगी, अपने पेट में कपड़े रख के उसे गोल गोल घुमाएगी. ओह माय गॉड, ऐसा शो तो मैंने आज तक नहीं देखा. आप सब देखना चाहते हो? एक मिनट. आपको पता है यहाँ क्या हो रहा है? हाँ, वॉशिंग मशीन को अवार्ड मिलेगा. यहाँ पर अप्लायंसेस खुद नहीं आते, बल्कि इंसान जिन्होंने उनको बनाया है वो आते हैं. आप जाइए यार यहाँ से. अरे तो जिन्होंने बनाया, मैंने भी तो अभी बनाया. अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने घर में एक क्या वॉशिंग बनाया? मशीन बना के आया हूँ. उसका पेज ढीला था. मैंने कहा ले भाई, हो गई. सी देखो, मैं आपको बताता हूँ, मेरा अप्लायंसेस के साथ बड़ा सीधा रिश्ता है. मैं अप्लायंसेस की इज्जत करता हूँ, मुझे प्यार है उनसे. मैं आपको बताता हूँ, बचपन में जब मैं छोटा था, जैसे आप भी थे, मैं स्कूल जाता था ना, मैं माइक्रोवेव बन के जाता था. कई बार छोटे छोटे बच्चे क्या करते थे, अपना खाना गर्म करने के लिए मेरे मुंह में रखते थे. तो मैं क्या करता था? बताइए बताइए, आप बताइए. क्या करते थे? क्या करता था मैं? बताओ. क्या? बोलो आप ही तो. बताओ. इट्स कॉम्प्लिकेटेड. क्या नाम क्या है आपका? कृषिका. कृषिका. वेरी नाइस. आपको समझ नहीं आएगा, आपसे बात करता हूं. मेरे को बताओ, एक भूखा माइक्रोवेव बच्चा, उसके मुंह में आप खाना रखोगे तो वो क्या करेगा? ऑब्वियसली खा जाएगा यार. आई वॉज अ किड आफ्टर ऑल. मेरा एक टेक्निकल अवार्ड बनता है प्लीज. सर हम आपको अवार्ड नहीं दे सकते हैं, ये डीटा है. प्लीज प्लीज दे दो यार, प्लीज अवार्ड दे दो. आपका क्या जाता है? देखो कोई अप्लायंस होगे तभी तो मिलेगा आपको नहीं नहीं, अवार्ड. देखो मैं आपको बताता हूँ क्या है सीन. देखो, मेरे को अवार्ड किस चीज का मिलना चाहिए? वॉशिंग बेवकूफ मशीन इंसान हो का. गई मेरी खराब. देखो, वॉशिंग मशीन हो गई खराब, मैंने उसके अंदर फिर भी कपड़े धोए. पूछो कैसे? पूछो. मैं खूब सारे कपड़े लेके वॉशिंग मशीन में बैठा. उसके बाद मैंने थोड़ा सा डाला डिटर्जेंट पाउडर, 1 बाल्टी 2 बाल्टी पानी, और फिर जो मैं घूमा शक्तिमान की तरह. ओ माय गॉड. सर आराम से, चक्कर मत खा लेना. ओह, जो कपड़े पहने थे वो भी धुल गए. 1 पंथ 2 काज. बोलो हाँ कि ना? बट इसमें ये बेस्ट अप्लायंस कैसे हुआ? क्यों दें आपको अवार्ड? सर आपको Best- अवार्ड नहीं मिल सकता है, बात मानो. क्यों? नहीं मिल सकता है, ये डीटा है. यहाँ बेस्ट को ही अवार्ड मिलता है सर. ये नहीं बोलना था, गलती से बोल दिया इसने. गलती से. गलत आदमी है ये. गलत, कांटा, क्रॉस, नो. देख मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन. बढ़िया अप्लायंस, बेस्ट अप्लायंस को ही देना है ना. आई एम द बेस्ट अप्लायंस ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा कह सकते हो आप. कौन सा अप्लायंस? मेरा नाम है बलविंदर सिंह बुर्रा, फेमस फ्रॉम राजौरी टू पीतमपुरा. बट मेरे दोस्त मेरे को क्या कहते हैं?
बेवकूफ। नहीं नहीं, इसकी बातों में मत जाओ। मेरे दोस्त मेरे को कहते हैं बुर्रा द एयर प्योरीफायर। पूछो कैसे? कैसे सर? सिंपल, मैं अपने अंदर खूब सारी हवा खींचता हूं, उसे अपने अंदर स्टोर करता हूं, ऑक्सीजन अलग करता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड अलग करता हूं, ऑक्सीजन अपने अंदर ही रख लेता हूं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देता हूं। कैसे छोड़ते हो बाहर? उसको मत देखो, वो हो नहीं सकता, दिखाया नहीं जा सकता, ऐसे। अरे यार यश, आई वुड से ऑसम ऑसम सर, ऑसम बुर्रा जी। यार सुनो ना, कहीं तो पड़ा होगा अवार्ड, दे देते हैं यार, दे देते हैं। जाओ, ये लड़की क्या कर रही है? सुनो सुनो, दे देते हैं। हाँ, आप, मैं एक काम करता हूँ, मैं ना हमारी टीम से पीछे बात करता हूँ, ठीक है? जैसे ये इवेंट पूरा रैप अप होता है ना, हम आपको वापस से स्टेज पे बुलाएंगे और किसी के सामने भी आपको अवार्ड नहीं मिलेगा। वेरी नाइस, ठीक है सर, बिंदास। तब तक आप आ जाके बैठिए सामने। देखिए, नहीं मैं बैठता हूँ। एक मिनट, क्या होता है देखो, अवार्ड तो मिल ही रहा है, फाइनल हो गया। कभी कभी क्या होता है, आदमी स्पीच देना भूल जाता है, यू नो, तो ये अवार्ड वाली स्पीच में अभी दे देता हूँ। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, थैंक यू माय चाइल्डहुड फ्रेंड्स। बस स्पीच आपकी इतनी थी क्या? शाहरुख खान फैन हो आप? और नहीं तो ये क्या क्या चल रहा है? ये चल रहा है। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। थैंक यू हाँ। All right. There's a lot to celebrate this evening, and every celebration needs a dialogue. As we reward the best tonight, it's also important to look how far Bharat has come as a manufacturing hub. We are not only making in India, we're also making for India. And that's the topic for our first discussion of the evening. So let me call upon the stage Mr. Sanjay Chitkara, Director and Co-Chief Sales Officer, LG Electronics India, for a fireside chat on Design for India, building appliances that actually work here. Leading this conversation will be Mr. Manas Tiwari, Technology Editor, Times Network. A big round of applause, everyone. Over to you, Manas. हेलो हेलो सर, बहुत परफॉर्मेंस प्रेशर आ गया हम दोनों पे, बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस प्रेशर आ चुका है हम दोनों पे। जैसा पाठक जी ने स्पीच दिया, जैसा हमारे कृष्णा जी ने भी जो एक्ट किया, आई थिंक लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ ऑन अस टू मेक श्योर दैट दिस crowd, yes, to hold the crowd, that this audience doesn't get bored, and I think we're going to put our best foot forward, guys, but let's keep up the energy before we start this conversation. Can I have a huge round of applause for Sanjay sir here? Thank you. सर, अप्लायंस ना जब खरीदता है ना इंसान, बड़ा इमोशनल डिसीजन होता है इंडिया के अंदर. इट्स नॉट एन इंडिविजुअल डिसीजन, इट्स अ फैमिली डिसीजन, राइट? मेक इन इंडिया पे हम बहुत बात करते हैं. वी ऑफन टॉक अबाउट हाउ मच वी आर मेकिंग इन इंडिया, हाउ मच वी आर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया. वी ऑफन निग्लेक्ट द फैक्ट दैट वी आल्सो नीड टू डिजाइन फॉर इंडिया, राइट? बिकॉज अगेन इट्स अ वेरी इमोशनल डिसीजन. So what are the biggest challenges and opportunities that you see in a market like this, where buying an appliance is such an emotional decision? You've been around for so many years. I'm sure there's so many learnings there to share. So, see, I am in this industry from last 36 years. So what I feel, India is a collection of many countries where every region has different taste. And see, we are a multinational company, so we work with our Korean colleagues also. And there is a saying among them कि अगर आपने इंडिया में काम कर लिया, you can work globally anywhere because it is such a diverse market. But despite of that, in India, one thing is very common is that emotional drive, which connects with every consumer. And what happens, we buy things with a very emotional choices we make, and then we justify rationally. So I have seen in my journey of last 36 years, like many brands died because they focus too much on functionality and product, while they ignores our emotions, the overall brand experience, the emotions like love, care, safety for
along sustainability of your products, rewarding your hard work. So all these things. I still remember when we came to India in 1997, and there were many local brands here, and we launched our TV with Golden Eye, and that connected very well with Indian emotions of the parents who wanted to take care of, protect the eyes of their children. And that laid the foundation of our TV business. When you design specifically for India, like this is one of those examples, what are the biggest factors that you keep in mind? Because there could be many, like, climate is one, power fluctuations in a lot of parts, water quality, usage habits is one, right? India consumes its, devices or the experiences very differently from the rest of the world. So I feel that out of all these factors which you are mentioning, for India market, the biggest factor is the price and the quality at that price. So yesterday we were in Gujarat. My many team members were also there, and there was a partner meet. So we started the discussion. I asked everyone that what was the gold price when you got married? Like जब मेरी शादी हुई थी, the gold price was 5,000 rupees, and now it is 1,60,000 rupees. Wow. So my children, उनकी ticket half ticket थी around 18 years ago. Now they charge full ticket. So most of Indian families, middle class family, they used to travel by bus or train. Now they can afford flights. But irrespective of anything, your salary increase, income increase, but the price of a single door refrigerator, entry level refrigerator, that remained 10 to 12,000 rupees. It never changed. Like a law of gravity, it was eternal. So the price, while the income level and affordability is improving, and time is rewarding everything, but our products prices are not increasing. So the biggest strength of LG was that we always taken care of affordability, and with the affordability, we gave excellent products. And when the prices are not increasing, brands compromise with the quality, with the innovations, and their margins reduce. And I have seen around 20-30 brands died during last 30 years of our journey. But we still hold a market leadership, and almost each and every product category we hold highest market share. Absolutely. And sir, when we talk about designing, when we talk about innovation, when we talk about experiences, we often refer to global experiences and how those are brought into the products that we get to experience in India in this journey of more than 3 decades. What were the experiences from the Indian market that actually helped you shape up your global product roadmap or bring in features or experiences to your global products globally? So, there are many examples for this, but today for this meeting, I'll take an example of air purifier, for which we got the award also. The air purifier, which can clean Delhi NCR pollution, जो यहाँ की हवा और आत्मा को शुद्ध कर दे, वो globally कहीं भी काम कर सकता है. ये बात तो है. So, see, the global manufacturer, they design the air purifiers for Western countries, where there are the domestic dust particle of 2.5 m and animal denters. But in India, we have a dense, in Delhi NCR, dense chemical smoke. So to clean this, it's very difficult, and we've seen the air purifiers are running still, consumers are feeling some throat infection or the foul smell. So we designed a air purifier which is moving from mechanical operation to molecular chemical action, which can remove all these gases. Of 11 power plants are there in a 300 radius of Delhi, which are producing a lot of chemical air. So these can remove SO2, NO2, CO2, and these days we are testing in Indian market, and if we got the good response, and we are getting the test results are very good, and the idea is to launch these globally. And because this, I mean, as you mentioned, the conditions are so challenging, it obviously affects the longevity of a product, of a device, of any appliance that you are selling.
पाठक जी तो आज करके डिमांड कि आप ऐसे बनाएं फ्रिज, ऐसे एसी बनाएं जो 20 साल तक अपग्रेड ना करने पड़े. तो I want to understand from you that what are you doing, what is LG doing, how does this longevity factor, this reliability factor affects the way you think about repairability, software support? So we don't, the first thing is we don't treat the long life cycle, like हमारे product 10-12 साल 15 साल लोग use करते हैं. So we don't treat it as a business threat. We feel it's a opportunity to build long time brand loyalty with our customers. So we don't push very aggressively the artificial obsolescence of our product, like slowing down the software or spares नहीं है उनके 5-10 साल तक. So we don't believe in this. What we believe is that our upgrades are basically based on human aspiration to evolve. कि वो अपने आप को रिवार्ड करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं. अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने अपना ये फोन कब चेंज किया था लास्ट, when did you change your? सर यहाँ बहुत सारे टेक जर्नलिस्ट हैं, वो बहुत जल्दी चेंज कर लेते हैं. बट आई मीन इफ यू टॉक अबाउट एनीबडी आई नो इन माय फैमिली, आई मीन यूजुअली 2 to 3 years they probably try and use the phone. So I feel people don't change their functionally working products just for just like that. Yeah, absolutely. They change their functionally working products because the new product reflects their new image, new personality, new taste for the design and features, and their new status. They have evolved in their life, their upgraded lifestyle. So that's how we believe in all these things. तो पहले तो हम, आपने देखा होगा वो Maslow law of hierarchy है. So we fulfill the basic needs like service, safety, and we get their subconscious trust. Once we fulfill these basic needs, we focus on that other aspirational needs, which triggers the upgrade of the products. Absolutely, and I think, sir, LG has been a remarkable story for India over the last 3 decades, and I wish you all the best. I hope you keep innovating, you keep making these great products that India uses. आज आपको एक वैलिडेशन तो दे के ही चले गए पाठक जी, एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. इट वाज अ ग्रेट कन्वर्सेशन. थैंक यू. Can you please stay back and offer a token of appreciation to Mr. Sanjay Chitkara? We've celebrated innovation on stage, and now it's time to dive into the conversation shaping the future of the industry. Because behind every breakthrough product is even a bigger idea. And that's exactly what we're about to explore. Tonight, we are privileged to have some of the finest industry minds with us. So let's fill this hall with applause as we invite our distinguished panelists to join us on the stage. Let's welcome Mr. Rajiv Singh, Managing Director of BenQ India and South Asia. Mrs. Swati Samadhar, Head of Government Affairs at CP+. Mr. Sanjay Jain, Director at Elanpro. Mr. Mayank Sinha, Head at CellSmart. Moderating this discussion for us, please welcome Mr. Aman Rashid, Senior Assistant Editor at Digit. A big round of applause, everyone. All right. Over to you, Aman. Thank you, Krishika. Thank you, Yash. First of all, a huge round of applause for these people. I think you guys have been amazing this evening. So a huge round of applause for Yash and Krishika. Thank you. Thank you, Aman. Good evening, everyone. Good evening, esteemed
guests. So, first of all, I'll like to start with an opening question for every one of you. I would like to know your 2 cents, 30 seconds each. So, Mr. Rajiv, we'll start with you. India is becoming one of the world's biggest manufacturing hubs for consumer durables. What's the biggest opportunity that still remains untapped? I think in the overall ecosystem, one thing is completely missing, which is the display fab manufacturing. Because of that, because display is now an integral part of almost all the devices. And not having a display fab in India, that means a good part of every product still has to be imported into India. And that's the one big thing which is yet to happen, in my opinion. Right. Sanjay, you would like to add? Yeah. Yes. I think manufacturing has really taken a big leap in India. Probably the next thing should be the innovation. That will put India on the global stage, because we should not be only making, but we should be leading the world in innovation with all the technology which is available with Indian engineers, and we have some of the top engineers globally leading the tech companies. So all that should come into manufacturing also. Yes. Mayank? No, I come from a recycling space, and what I've seen is that brands are now embracing circularity, and I don't say it in terms of a fancy word, but because someone, and I represent SellSmart, we build a platform to go directly to consumers to pick up products. So brands are not able to perhaps talk directly to a consumer. It goes through a retailer, it goes through e-commerce. So they have understood if there is a business model where you can build exchanges, you can build take back by providing an attractive value, which is their value and that of a recycler, and you can go to a home and pick it up. The customer is embracing it and brands are embracing it. So I have seen in the past 1 year, perhaps 10 odd brands have partnered with us, and they have demonstrated that if you have an interesting circularity or a take-back business model, which not only is great for the environment and national interest, but is also a sales enabler, it can be turbocharged. And I've not seen that anywhere globally. And I think that's a very important testament to the ecosystem, and I would also say the vision of many brands. Right, Swati. Hi. Thank you. I think so the biggest opportunity currently in India is not make in India, but design in India, design for India, and design for the world. So India is a very unique country, and it kind of represents the global south. So our environmental requirements, our population requirements, this mere size of any consumer base in this country is way different from many of the advanced economies. So India has to move from assembling to designing, writing the code for the software, which is running each and every appliance which got an award today, and as well as ensuring they are tested for India and for the world. So that's my 2 cents. All right, Swati, so I'll be continuing with you itself. So consumers expect global quality regardless of where a product is manufactured. How do companies maintain consistency while scaling production? That's a fantastic question. And you know what? You've asked this in an opportune time. In India, quality is maintained by multiple agencies, but the biggest agency we know of is BIS, right? I represent an industry which makes surveillance cameras. BIS with the nodal ministry, which is Ministry of Electronics and IT, has ensured not only do the brands manufacture in India, they manufacture as per the technical norms and the cyber-secure requirements which are necessary for such a sensitive product. So much so that Indian companies have definitely benefited for that. And the proof of the pudding is in the eating. Almost
50% of the market share, more than 50% of the market share is now with the Indian companies in surveillance cameras. But whilst having said that, even global brands have started manufacturing in India and writing the code in India to ensure that they get certified. So I think quality is determined by what you can deliver with standards and by following the regulations, and consumers follow and consumers buy. I mean, there is no doubt about that. Right, nicely said. With that, I'd like to move to Rajiv. Rajiv, you recently did a podcast with us where you also shared the BenQ India vision. So I would want to know, localization doesn't always mean making every component in India. How does your organization decide what should be local and what should remain part of a global supply chain? Okay. So first of all, we don't believe that, when you do make in India, you should make each and every part in India. Right. You should really leverage on the things which are good in India. However, much more important than that is when you have a product which is designed for India. And that is an integral part of our manufacturing process. Right. That we actually focus a lot on Indian consumers, and we have certain product categories which are completely, they have come into being because of the consumer research in India. They were launched first in India and then globally, and they have been a big hit. All right, Sanjay. So global supply chains have become less predictable over the last few years. How has that changed sourcing and manufacturing strategies for you guys? Yeah, it has been a nightmare actually for the last couple of months. In fact, post-COVID, things have really taken a big hit. We have all gone through, whosoever has been into manufacturing or import, because personally, we represent commercial refrigeration, where the biggest component, that is compressor, is still imported. And we have been facing this challenge, so it's a big challenge. But now we are also looking at not leveraging that, okay, you have to bring it from China or Turkey or other European country, but start developing other things which can be done in India. So the reliance which was there earlier has started reducing. And also, as ma'am was suggesting, thanks to BIS enforcing certain things, we have started looking more inward and developing the ecosystem, which in our industry per se was little less. And we were still relying more on imports, and so that has really impacted, and it continues to hurt us. But maybe in next 2-3 years, India will be self-reliant, particularly on compressor side, which is a bigger challenge for us. Definitely, definitely. Mayank, manufacturing conversations usually end at production, but products eventually become e-waste. How should sustainability become part of the manufacturing conversation? See, there are two things. One, we were just talking about disruptions in global supply chain. If you see the innovation that is happening in the space of recycling, companies, even companies like us, are able to extract 27 metals at 99.9% purity, which means that they can be reused in original manufacturing. I think the second thing which is very important is that consumer behavior has been modified or changed in terms of instant gratification, quick convenience. And we've seen that even in our own journey, places in South India, many cities, places in Kerala, it's very counterintuitive. When we reduce our prices a bit of what we are purchasing, it actually sometimes the sales have gone up or orders have gone up. And what we've noticed is that consumers are looking for convenience. They are looking for someone to plug the whole ecosystem of not only buying, but quickly someone coming and pick up. And I think brands who are partnering with that, who are building this into their ecosystem, are getting perhaps some edge in a hyper-competitive market.
So it's a very interesting ecosystem, and the business models that are quickly evolving. Once you can align with them, brands innovate. And I think that's one part of the whole manufacturing and selling process. Okay, the next question I would like to address to both Rajiv and Swati. Maybe Swati can take this first. So, global supply chains have become less predictable over the last few years. How has that changed sourcing and the manufacturing strategies? So, global supply chains went through multiple upheavals, right, from COVID, as Sanjay mentioned. So, there was this semiconductor, supply chain crisis. Then there was critical mineral crisis, and now we are dealing with the memory crisis, along with SOC, of course. And the memory crisis is such that it is affecting each and every appliance in the consumer segment, right? So the only way you can deal with this is diversification of your supply chain. Ensure that you can mitigate your losses, cut your losses by going and shopping in other, geographies. While you're doing that, one of the interesting things Indian companies miss out is that if you bring in the design from outside, you will bring in suppliers which are set in stone in that design. If you design here, and that goes for every manufacturer, you define who should be your supplier. Once you start designing in-house, you design with the supplier. And that needs to change. And I think at CP Plus, we are doing a fantastic job of that. And I hope all of us can. I think I would really second her, because in this kind of uncertain environment, like being a company which is primarily into electronics and IT hardware products, we don't have any other choice but to depend on the eastern part of the world to get sourcing our products. So one thing which is there is that, of course, looking at this, we have changed our stocking policy and also our forecasting, because both of that have really helped us to really mitigate the kind of risks which are there, which are very, very uncertain. You just cannot predict it, what is going to hit you next. Not only the supply situation, but also the price fluctuation is also, for so many critical components, is so wide. So that being the case, the kind of local manufacturing that we are doing and some local sourcing is helping us, but we know for sure that for critical components which are there, which are actually causing these kind of issues, for them there is no supply chain in India. So stocking and forecasting for a longer term is the thing that we are doing. It is really helping us. Perfect. So Sanjay, has India reached the point where companies evaluate it for innovation and not just manufacturing? In certain categories, yes. Overall, it is still a long way. I think that's a process for any economy to develop. The first thing which you start doing, as ma'am said, you start assembling. That is the first step. Then you start trying and do some localization and move into a complete manufacturing. We have done the same. And then you start innovating, designing. And so I think our appliances particularly definitely have started becoming much better than what they were earlier. Mobile technology, though we may still be dependent on Apple and Samsung, but yes, we have done something over there. In my line, particularly commercial refrigeration, we are doing a lot of backward engineering still, because the globe is much, much ahead of us, be it in refrigerant or compressor and other things. So India is still, in my wisdom, in my views, we are still at least 10 years away from being real innovators and designers overall in the appliances segment. Nicely said, sir. Mayank, I would like to address the last question to you. Should recycling and component recovery become part of India's manufacturing strategy rather than being treated as a separate industry?
See, as was mentioned, supply chain disruptions, shortage of critical material, I think is a challenge. And what's going to happen, especially with EV batteries, with the industry, with e-waste, that once that ecosystem develops, which is developing very quickly, you have feedstock which is already there. The appliances or the semiconductors and the batteries are in. And when you start recycling it, you're providing that raw material back to manufacturers. So obviously, if that link is there, that the processes you have is mirrored to what a manufacturer needs, then those materials become valuable. And I can see that that is happening. Even the government is pushing for it. It just, perhaps the ecosystem was too small. I can see it's becoming much larger. And then obviously there will be collaboration and innovation will flow through it. Perfect. I still think that we have a couple of minutes left. So any closing remark on Digit India's Top Appliance Awards this year? I think we can start with you, Sanjay. Quickly. I think it's a very wonderful initiative because it motivates us to perform better. Also, it gives us an opportunity to talk about the new innovations which are happening and what next. So I think it's an incredible initiative. Thank you for doing this. Thank you. Sir. So first of all, my association with Digit goes right up to almost 25 years back. Because first I was an avid reader for Digit. And because at that point of time, this was the only magazine which, because I am really interested in high tech always. So it used to give me all the right information at that point of time. After that, I have seen in different companies that I worked for, especially in BenQ, that the Digit has been testing our products into different categories. And we have seen that amongst all this kind of exercise happening anywhere else, Digit is completely, totally different. They do very rigorous testing and their reviews are really insightful for the customer. And I'm so happy that now this thing has been extended to the appliances segment. Thank you so much, ma'am. I'll take the consumer hat. For me, this is a very interesting format because I feel there is a lot of clutter, there is a lot of confusion as a consumer what to purchase. But the parameters that you are putting in are, I think, in line with what consumer needs would be. And I'm pretty sure the digital traction that you will get will give brilliant insights on consumer behavior. So it's a very, very interesting thing. It's happened globally in a few places. So I'm glad we've picked it up here. Thank you. Swati. So, yes, it is a fantastic endeavor. And you know what's encouraging? Again, I have been reading Digit from the earliest days. That's how long I've been working. So it has always been a part of my work life. So what you have been doing through the magazine all this time, rating products, finding different rubrics to rate the products, has culminated into an award. What else? I mean, that is the ultimate high a product company can get, to get an award from a Digit. So I think very good. Congratulations and keep up the good work. Yes, thank you so much. I think so. We have just finished on time. My folks are here, Krishika and Yash. Thank you, people. This has been an insightful conversation. I'll like to hand over to Yash and Krishika. Thank you so much, everybody. I would request Aman Rashid and the panelists to please be on the stage. And Aman Rashid, please proceed this facilitating our panelists with a token of appreciation.
Thank you so much. Please make yourselves comfortable and enjoy today's evening. Let me remind everyone, today is the most credible and eagerly anticipated celebrations in the world of technology. Digit, India's Top Appliance Awards 2026 edition. Proudly presented by Times Network, powered by Hire, co-powered by OneUpTrade. We would also like to thank our strategic partner LG, sustainability partner CellSmart, and outdoor partner Heights. With that, ladies and gentlemen, I think we should move ahead and talk about more awards. All right? So, to present the next set of awards, I would like to request Manas Tiwari, Technology Editor Times Network, to please come up on the stage. Also, along with that, G.S. Vasan to join us at the stage, Chief Copy Editor, at Digit. to present the awards to our winners. Dita for Best 5-Star Split AC goes to LG. The Dita for Best 3-Star Split AC goes to Hisense. The Dita for Best Split AC Value for Money goes to Optimist. The Dita for Most Intelligent AC goes to Hire. Guys, can we have a huge round of applause for our winners? The Dita for Best French Door Refrigerator goes to LG. The Dita for Best French Door Refrigeration Value for Money goes to Hire. The Dita for Best Side-by-Side Door Refrigerator goes to Samsung. The Dita for Best. The Dita for the Best Side-by-Side Door Refrigerator for Value for Money goes to Toshiba.
lock goes to Godrej. The data for the best smart lock value for money goes to TP-Link. The data for best video doorbell goes to Hikvision. Guys, can we have a huge round of applause for our winners? The data for the best video doorbell value for money goes to Kubo. The data for best top load washing machine goes to Samsung. A huge round of applause, everyone. The last award of this set, ladies and gentlemen, the best top load washing machine value for money. The data goes to Lloyd. A huge round of applause, everyone. Thank you so much, Manas Tiwari and Vasan. You make yourself comfortable now. All right. Sorry. So before we dive into next set of... एक मिनट, मैं आपसे पहले बाद में बात करूंगा। मैं जरा ऑडियंस से बात कर लेता हूँ। आप सब लोग, या दो तरह के लोग आए हुए हैं, एक वो जिन्हें मेरा एक्ट पसंद आ रहा है, एक वो जिन्हें मेरा एक्ट पसंद नहीं आ रहा। तो मैं आपको बात बता देता हूँ। देखो ऐसा है, जिनको मेरा एक्ट पसंद आ रहा है वो ताली बजाए, और जिनको मेरा एक्ट पसंद नहीं आ रहा उन्होंने एक काम करना है। आपने अपने दोनों हाथ ऐसे रखने हैं, इमेजिन करना है इनके बीच में मेरा मुंह है, और उसके बाद ऐसे ऐसे मारना है कि मेरा मुंह यहाँ खड़े खड़े लाल हो जाए। यस और नो। अब यस मत कहना, बस ताली मार देना। अरे चुप, एक मिनट। अब आप मुझे जरा बताएंगे, आप वापस आ गए डिस्टर्ब करने, और ये नया आइटम कहाँ से लाए हैं? आइटम नहीं है जी, ये लड़का मेरा भतीजा है। तो क्या करूं? अरे करना क्या, जीत रहा बेटा, बल्ले बल्ले कर। अरे फालतू का बल्ले बल्ले मत कीजिए यहाँ पर। मैडम ऐसा है, देखो इसका नाम है बल्लू बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले। आप काम की बात करिए, काम की बात करिए मिस्टर बुरा जी। हाँ, काम की बात देखो ऐसे जी, मैं यहाँ से निकल रहा था, मैंने कहा अवार्ड वगैरह मिल रहे हैं तो एक दो अवार्ड है, इसको भी दिलवा देते हैं। क्यों ऐसा क्या किया है आपके व्हाटएवर ने? ओ ये व्हाटएवर नहीं है, मैं आपको बता दूं। देखो जी ऐसा है, ध्यान से देखो इस लड़के को, अपने मोहल्ले का मिस्टर कूल है, और मैं कह रहा हूँ जी इतना कूल है कि आप अपने घर में रख लो, रेफ्रिजरेटर की जरूरत नहीं है। ठंडा लड़का। इसको कूल गाय बोल। हाँ, और नहीं तो क्या? कूल गाय बताइए। कूल गाय इसलिए, देखो जी आपकी चाय को, हॉट टी को ये 20 सेकंड के अंदर अंदर आइस टी बना सकता है।
पूछो कैसे? वाटर टैलेंट कैसे? सिंपल, करके दिखाओ जैसे सुबह किया था। फूक मार के। बल्ले बल्ले, चाय पी के घर को चले। हाँ भाई, घर नहीं जाना, पहले अवार्ड लेके जाएंगे। कौन सा अवार्ड, कैसा अवार्ड, किसका अवार्ड? सर आपको इन चीजों के लिए अवार्ड नहीं मिल सकता है। देखो, अवार्ड तो आपको देना ही पड़ेगा जी। ऑब्वियसली क्या होता है, ऐसे कैसे आपको अवार्ड मिल जाएंगे? आपके पास ऐसा क्या है जो आपको अवार्ड मिले, ये बताओ। हमारे पास बहुत कुछ है ये अवार्ड देने के लिए। जैसे कि? अब ऐसा है बेटे, पहले तू रिमोट निकाल। भाई एक मिनट, कौन सा रिमोट? अरे ये सारे रिमोट भाई हम लेके आए हैं। कौन से रिमोट है ये? घर के रिमोट है, टीवी का, फ्रिज का, सारे रिमोट। देखो भाइयों, पकड़ लिया यहाँ पे। क्या बोला था आपने स्टार्टिंग में? कि मुझे जेंजी और समथिंग ऐसा कुछ स्पेशल यूथ आइकॉन ऑफ द सेंचुरी इन्होंने बोला था, याद है ना? यूथ आइकॉन ऑफ द सेंचुरी। एक बात बताओ भाई साहब मेरे को, हाँ जी, अगर आप यहाँ हो, आपके घर में किसी को टीवी देखना है या फिर किसी को एसी चलाना है, गर्मी का सीजन है भाई, बारिश हो रही है पर एसी तो चाहिए ना। तो अगर किसी को वो चलाना है, आप यहाँ पर हो, तो वो कैसे चलाएगा? गुड गुड, वेरी गुड। क्यूट तो है लौंडा। अब देखो ऐसा है, बल्लू यहाँ है, मैं यहाँ हूं, ठीक है। अगर घर में कोई टीवी चलाएगा या एसी चलाएगा तो बिजली का बिल कौन देगा? अरे इंटेलिजेंट, व्हाटएवर नाम है आपका बुर्रा जी। हाँ जी। आजकल सारे अप्लायंसेस ना फोन से चलते हैं। कौन से सदी में जी रहे हैं आप? ओह, फोन से चलते हैं? हाँ जी। वेरी गुड। बल्लू, पार्सल ले जाओ इसे। मैडम ऐसा है, फोन में अपने साथ ही लेकर आया हूं, आप इसमें अपना नंबर सेव कर दो और इसमें नाम लिखना अपना गिद्दे वाली कुड़ी नंबर 12। बड़े अच्छे सपने दिखते हैं आप। एनीवेज, इस आदमी को पैसे बचाने हैं। अगर किसी ने आपके घर में फॉर एग्जाम्पल वाटर प्योरीफायर ऑन कर दिया, फिर क्या करोगे मिस्टर बुर्रा जी? मैंने पानी का कनेक्शन ले ही नहीं रखा। वाह 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 वाह, आदमी है पानी भाई, का कनेक्शन पानी? नहीं, कनेक्शन नहीं ले रखा। एक बात बताओ, ऐसे तो अगर अगर कोई खाना गर्म करने लग जाए तो माइक्रोवेव नहीं चलाए, कैसे चलेगा? माइक्रोवेव वाले बर्तन हम अपने साथ लेकर आए हैं यार। अच्छा, और ऐसे तो फ्रिज का बताओ। अगर क्या आदमी बातें करता है ये इधर उधर की? मैडम आप बताओ मेरे को। यार मैं क्या ही बताऊं यार, आप प्लीज। यश नहीं नहीं आप नहीं, ही आप संभालो, मैं क्या नहीं बताऊं? प्लीज देखो, ऐसा है, अवार्ड आप एक आधा दे ही दो। एक्चुअली क्या है कि मैं आपका एड्रेस तो मांग नहीं रहा। मिलना भी नहीं। अच्छा ठीक है, सॉर्ट करते हैं बुर्रा जी, व्हाटएवर इट इज। आप दो लोग हैं जी, हम दो लोग हैं। बुर्रा देखो, और एक ही आपका बले बले व्हाटएवर। हाँ, अवार्ड whatever। एक है हमारे पास। हाँ जी। अब दोनों में से किसी ऐसी शक्ल को अवार्ड देंगे ना जो उसको अच्छा, मतलब जिस पे वो सूट करे। तो डिसाइड कर लो किसको देना है। एक काम करते हैं, आप और आप, मुझे आप दोनों के नाम नहीं पता, अच्छा। लेकिन हम दोनों में से किसी एक को अवार्ड देंगे, ठीक है? दोनों में से किसी एक को अवार्ड मिल हाँ, सकता है? अब आप ये डिसाइड कर लो कि my आपको God। दोनों में से किसको अवार्ड मिलेगा। ओ, मतलब एक मिनट, मेरे को एक बात बताओ। ये लड़का देख रहे हो, मैंने इसको अपनी गोद में पाला है, अपनी गोदी में खिलाया है मैंने इसे। ये जितनी बार इसके माथे पे चोट लगी है, मेरी गोदी से गिरने की वजह से लगी है। और इसकी पीठ पे जो स्क्रैच है ना, दिखा लड़के, इसकी पीठ पे जो स्क्रैच है, मैंने इसे पकड़ के जमीन पे इसका पोछा लगाया, तो हम तब क्या जाके करें? लगे हैं। तो हम बताओ। क्या करें इससे? मैं आपको बताता हूँ, देखो, अब हम दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। देख, तू ऐसा कर, मैं बलिदान दूंगा, तू घर चला जा, है अवार्ड मैं ले लेता हूँ, प्लीज। बल्ले ओ बल्ले, बर्तन धो के घर को चले। अबे मैंने अवार्ड दिता। चलो अब आप भी चलो सर। नहीं, हो गया, थैंक यू सो नहीं, मच। एक मिनट, देखिए एक छोटा सा काम रह गया। वो है क्या कि क्या है छोटा सा काम? नहीं, मैंने क्या कि इतने लोग आए हैं तो मैंने एक छोटी सी कविता याद की थी, मैंने कहा आप लोगों को सुना देता हूँ, है आप लोगों के लिए जो लोग अप्लायंसेस बनाते हैं, अप्लायंसेस मेकर्स के लिए। मुझे पता है आप लोग सुन नहीं रहे, लेकिन फिर भी ध्यान से सुनिएगा। वन मोर थिंग बिफोर द नाइट एंड्स, you don't just make machines, you make amends. For time lost, for moments missed, you give it back. That's the real gift. Not steel, not wires, not circuit at all, not circuit alone. गलत लिखा होगा, not circuit alone. You build the feeling,
that make a house a home. Oh, wow, wow, wow. वाह 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 Very एक well लाइन और done. रहेगी, एक लाइन और रहेगी, एक लाइन और रहेगी. You have hit your limit for chat message. Limit will reset in 5 hours. एक मिनट, ये आपने लिखा? हाँ. नहीं, लग नहीं रहा मेरे को. मैंने ही लिखा है. नहीं झूठे. नहीं नहीं नहीं. ना 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 लिखा ना. है. किसने लिखा है? सच्ची बताओ. कौन है वो ये- शायर? Artificial intelligence. क्या 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 बोला? Artificial intelligence. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. AI. AI है भाई, ये AI है. AI. चलो. कोई नहीं. हाँ हो गया. कौन सी लाइनें खा गए? सारी ना. We would like to thank our sponsors, powered by Hire, co-powered by What Up Trade. We would also like to thank our strategic partner, LG, sustainability partner, SellSmart, and outdoor partner, Heights. All right, before we dive into the next set of trophies, let's hit a bit of pause because up next, we have a panel discussion that I think a lot of you have been waiting for. It's called Beyond Smart. Can AI actually improve everyday appliances? And honestly, given how many of tonight's categories involve smart devices, this conversation couldn't be better timed. Please help me in welcoming our panelists for this discussion. Mr. Manu Sharma, Managing Director, Dreamy. Mr. Nikhil Sareen, co-founder, Kubo. Guys, can we have a huge round of applause for our panelists? Mr. Bijoy Alelo, Director and COO, TP Link. And Mr. Tarun Pathak, Research Director, Counterpoint. A huge round of applause for them, please. And to moderate this panel, I would like to welcome on the stage Mr. Mithun Mohandas, Senior Editor, Digit. Over to you, Mithun. Thank you. Seems I'm the guy. Hello? Are we live? Okay. Seems I'm the guy they bring in if they want to keep things short and sweet. So I just saw time's up even before the session began. So I'll keep it short and sweet. The first question, I'm going to open it up to the entire panel. Now, this is regarding the AI features that are being included in practically every appliance. So I wanted your honest take in regards to the AI feature in your appliances that you find to be genuinely useful. So Nikhil, how about you start off? Perfect. Good evening, everyone. I think AI is now getting part of almost every appliance, right? So hard to pick. It's genuinely useful. But I think one of the examples I'll take is probably an air purifier. I think it just fits perfectly, right? So imagine you install the purifier and forget about it, right? You come back home, it detects that you've entered home, it turns on its own. It's continuously monitoring the air quality outside. It's connected to the the weather station to get real-time data on how the air quality is. It's adjusting, recognizing your pattern, your usage. So basically the way AI works in this is you really don't have to think about it, right? So that's the way I think the best use cases where products, it generally just fits in and you don't really have to make too much effort as a consumer. I think that's a great use case to me. Similarly, I think on cameras, etc., where it just detects let's say your child's crying, right? It gives you a detection and tells you that you need to take action, right? So it gives me important alerts. I think another use case where AI fits in well on devices. Manu, what about you? I represent Dreamy Technology, and we are into robotics, and clearly RoboVacs have come a long way for many years. I bought my first RoboVac during COVID. It was pretty standard, would just go from one location to the other. It's a very standard path. But it has evolved quite a bit, over the years and has a lot of intelligence from a basic device, which I really like. And Jimmy puts a lot of effort in, building the capabilities on RoboVacs. We work with almost 4 million data points, which goes through iteration of almost 35 times in the algorithms. And detection of the,
objects is very, very important. You know, our homes are very dynamic. You have toys, you have wires, you have cables, you have pets running around. And to navigate that and to ensure that, you know, there's a seamless cleaning, you know, in the house, despite all those objects, I think it's pretty interesting. And our RoboVax can identify almost 280 objects. They've been trained with 99.9% accuracy. I think that feature is fantastic, and that's real AI because it doesn't require any human intervention. I think the second feature is about, you know, an intelligent mapping. Say RoboVac comes in the house, you know, maps the whole house, identifies different type of rooms, and, you know, and makes decision how to, you know, carve the path. For example, you know, there are different types of flooring. So it navigates to different type of flooring and cleans and detects, you know, stains, and accordingly, you know, cleans the house as well. So I think RoboVax, in my view, as a category and the features of AI intelligent detection, it's just fantastic. It's a real use case scenario where consumers get a lot of convenience and, you know, they are able to live life at their own terms. Bijoy, about TP-Link? Yeah. Hello. I'm audible? Yeah. Hi, everyone. So I'm Bijoy, and I'm the director at TP-Link. And maybe I'm proud to say that almost all of them here, and maybe the ones watching at home live, must be using a TP-Link device at home. And we come into an appliance which is the most neglected one. You may not see it preferably until unless the buffering starts on your mobile or the buffering starts on Netflix, right? And of course, TP-Link overall is an ecosystem. We are not only a router brand, but we are much more than that. We are a smart IoT brand. We have smart door locks. We just saw one getting an award. So, of course, with TP-Link, I'll just give a real life example. You must have seen that previously. We used to always use, whenever you must have seen at home, internet used to come at very slow speeds, 54 Mbps or so, and nowadays you see maybe a 1 gigabit also at places like Bangalore, Mumbai, or the metros, right? And to get that speed to you, this is where TP-Link stands at. And it is not easy. Generally, we see the router working at the back end. It must be there years and years, and there must be dust and everything on it. But previously, it was not. It was just about giving you the internet out of it. But now it's all about the number of devices which have been used at home, right? So now there are maybe a family of 4, but there will be 15 or 20 devices at home, right? And to manage all those devices, there is AI which is working behind it, right? And of course, AI is something which should make life easier. And if you have to explain it to the audience that, okay, this is an AI feature, I don't think then that's the right use of an AI. AI should generally be working at the back end and making life much more easy. And that's what our routers do. So they divide the speed according to the usage of the appliances, whichever are connected on the Wi-Fi. Almost all of the devices are nowadays connected on Wi-Fi. All of them, what you saw, the ACs, the refrigerators, cameras, everything is connected through Wi-Fi, right? So AI is a very integral part of our ecosystem as well. Yeah. Now, quite a few interesting stuff from the folks who are building the AI products. Tarun, I want to get a market or industry perspective as to, is gaining consumer trust now a bigger challenge than implementing an AI feature in an existing product category? I think a very important question. So if you look at any other technology wave that has been here in the past like 4 decades, there has always been this trust deficit because technology arrives first and then trust builds up. So technology scales, trust is a cumulative factor, right? And it is very asymmetric because if you look at from the technology transition in the early 2000, we had the e-commerce boom, right? When it all started, there is a little bit of skepticism from the consumers and eventually trust built, and now like almost like 40% of the smartphones are being purchased on e-commerce, right? So trust is a very fundamental thing. Think of it as like snakes and ladders, like you build the trust and just one hallucination in AI, you go down and then you will be starting from scratch and then build on top of it. So I think it will take some time as technology scale.
AI for us is another technology in the horizon. It is here to stay, and consumer will take time to understand. Like there are two passive components to AI. One is which is sitting behind your products where consumer may not see it, and the other one is where you are conversing them physically, talking through an app. But the AI behind the scenes is making products better. I think the example that the gentleman has given. So that's the real AI what is happening, and the major scale I think will happen in a couple of years from now. Interesting insight. I'd like to bring it back to Nikhil. This is regards to the AI experiences that are built in products. A lot of them end up being designed in isolation and not a lot of collaboration happens. So from your perspective, do you believe that there needs to be more collaboration between brands? I think most certainly there needs to be more collaboration, but I think we're still in early days today, right? Like, I mean, for example, a lot of the devices today, I think, are using Edge AI, and they're pretty powerful, right? They can do stuff locally, they can sort of perform well, right? But if you look at, let's say, the new standards like Matter, which today people are talking about, right? So a lot of brands want to get onto that protocol, but our belief here is that I think in certain categories, certain brands will do things better, right? So we'll take a far more vertical approach. So, for example, in home security, we'll go much deeper, right? We'll build for the Indian household. We'll understand what problems happen here, and we'll try and solve for those, right? Whereas, if you talk about, let's say, Matter for as a protocol, it's probably going to be more horizontal. It's going to try and get as many devices onto that you have in your home to talk to each other and work together. So I think it's going to be a mix of both. I think brands will continue to build intelligence on their own platforms, go deeper, use AI. But I think definitely brands would be open to working with such protocols as and when they scale and they become more and more people start to sort of adapt to them. I think we'll be happy to collaborate and work with them. Now, Bijoy, I'd like to ask you about the amount of control that consumers should retain over, let's say, an AI feature being implemented in their device. And at what point do you believe that the automation becomes a little too intrusive? True. And this is like the talking point of maybe the recent times, right? And I feel now AI is a thing, as what I just mentioned, that it should be a thing which should be working at the back end. You don't. If you have to promote it for somebody to use it, it is not actually working for it. It should not actually work for you that way, right? And it's more about, if I talk about a surveillance camera, right? So it's more about, previously it was all about, okay, watch it at the time, go back, watch it, but now it's more about detection, right? So how does AI actually come into it? The detection part of it is, it has clearly segregated that, okay, if you watch something in front of you, if it's a pet, it detects, it will not give you a warning. But if it's a human, it will give you a warning, or it will give you a notification. So previously it was that every something passes on, or a light of a car passes on, it would give a detection. That is when actually it started to be a little nudgy for the customer also. Now he has improved that a bit. Now, this is like a detection, but when AI goes into the decision-making mode, it should not be. Okay, so AI should not make decisions for you. The decision has always to lie with the customer. Okay, and that is what, of course, with us also, with us in TP-Link also, all the decisions are generally kept at the consumer end. If they want a certain, if they want a certain device to work in a certain way, it has to be configured from their end. And no AI or no AI which is there in TP-Link or in any other device should be directly making those decisions. And I feel that should be the norm going ahead as well. And that should be the borderline where we say that it should not go past that. Yeah. Manu, when we implement a lot of AI features into devices, there's a lot of data involved. It has to learn about the room that it's operating on, study the environment, and collect a lot of data. And therefore, the question of privacy always comes into the picture. So where do you believe that households should draw the line when it comes to the amount of data that a device can gather from its environment? It's a great question. It's a very hard question. I think, first of all, consumers should not be making choices between convenience and privacy. Clearly, I think as the manufacturer, as a brand, you need to
build trust for the consumers. At Dreamy Technology, we follow three principles. First and foremost is the objective. What is the objective of collecting data? I mean, I've been working in technology world for almost 3 decades. And my experience been, I mean, technology and data that you can gather really allows to improve a lot of services, experiences, even troubleshooting, but not at the cost of getting personal data, which can be misutilized. I think subjectives has to be really defined. Second, it needs to be designed for privacy. I think that's very critical. For example, our RoboVax, it has camera in it, so it can take pictures, and sometimes it can take pictures not just of the dust particles, but it could be the background, it could be you, it could be somebody else. So all the photographs stay on the device. So I think it's designed by choice on the device, and consumers can, delete those photographs from the app. The third thing is, of course, encryption within the part of the design itself. I mean, you have to make sure that it is standard. And last but not least, I think you have to comply with the regulation and for any standards which is required in that particular country or the region. I think those three principles Dreamy follows very clearly. And it's not about, being AI compliant. I think it's about building confidence for consumers that, hey, we got these products from various brands and it works for you without compromising on your privacy. And that's the only way you can get success over the years. And that's the onus and responsibility of the brands to make sure that happens. So yes, definitely great convenience, great experience is fantastic. Of course, innovation is important, but without consumer trust, AI cannot move forward. So yeah, it's of paramount importance, and that's something every organization take it extremely seriously. Now, to close things off, I'd like to go back to Tarun. We've had the privilege of having you as part of our jury for deciding the awards. I want your genuine take on how was the overall process, and also, just an honest opinion, what would you like us to improve regarding the overall thing? Yeah, so again, as an analyst, we love insights, right? So my first impression when I was a part of the jury was the kind of the lab-tested data what we saw. Honestly, during that two and a half hour session, I learned plenty of things. So that talks about the insights. So it was not just the specifications we were evaluating or any marketing-based claims. It was genuine data. I think you showed also in a couple of slides. So that RPM thing, that was the first for me. Maybe my wife knows that better. But yeah, so I think that was it. In terms of like improvement areas, like we are living in a digital age. Instead of pen and paper, we could have made it digitized. That could have like saved a lot of time. Yes, for you as well to analyze the same. So that was the... Awesome stuff. So we heard about the amount of control that consumers should retain about their devices, the privacy safeguards that we need to have, and also that collaboration between brands is very important. So that was the panel, the second panel. Thank you all for joining us for this session. And I believe I can call on my colleagues again. I would request Mithun and panelists to please stay back, and Mithun, please felicitate our panelists with a token of appreciation. A huge round of applause, everyone.
A huge round of applause, everyone. Thank you so much, our panelists. Can I please request Mithun and Tarun to please stay back, our jury member. And by the way, ladies and gentlemen, you are watching Digit India's Top Appliance Award 2026 edition. 2026 edition. Thank you for adding. It is proudly presented by Times Network, powered by Hire, cooperated by One Up Trade. We would also like to thank our strategic partner LG, sustainability partner SellSmart, and our outdoor partner Heights. The data for the best semi-automatic washing machine goes to Intex. Can we have somebody from the Intex team to collect the award? The data for best stackable washing machine goes to LG. The data for the best robotic vacuum cleaner goes to Dreamy. The data for best robotic vacuum cleaner goes to, for value for money, goes to Milagro. The data for the best upright vacuum cleaner goes to Nook. Guys, can we have a huge round of applause for our winners? The data for best upright vacuum cleaner, value for money, goes to Dreamy. The data for best home security, value for money, goes to CP+. A huge round of applause, everyone.
data for best OLED TV goes to LG. With that, I would like to request Mithun to please join the audience and request Jayesh Shinde to join us on the stage. Tarun, please. I would request you to please stay back with us. The data for best QLED TV goes to Xiaomi. Huge round of applause, everyone. The data for best RGB TV goes to Sony. The data for best grill microwave goes to Samsung. The data for best convection grill microwave value for money goes to LG. The data for best solo microwave goes to LG. The data for best dishwasher goes to, once again, LG. 3 in a line. A huge round of applause, everyone. The data for best dishwasher value for money goes to Media. Ladies and gentlemen, the last award of the evening. The data for most reliable dishwasher goes to Bosch.
Thank you, Jayesh. Thank you, Tarun. You can now join the audience and enjoy the rest of the evening. Tonight, we've celebrated excellence, innovation, and extraordinary achievement across India's technology landscape. The pioneers we've honored this evening aren't just building great products. They're also setting new benchmarks, challenging conventions, and shaping the future of technology in India and beyond. So once again, let's give all our winners a huge round of applause. Thank you. Thank you so much. So, as we bring this evening to a close, it's fitting that we hear from someone who has been an integral part of Digit's remarkable journey. A leader whose editorial vision and passion for technology have helped shape one of India's most trusted publications. So, ladies and gentlemen, please join me in welcoming Mr. Manas Tiwari, technology editor and business head at Times Network. Come on, a big round of applause. The stage is all yours. Over to you, Manas. I think this is my moment to say, guys, we did it! Fantastic first edition of Digit India's Top Appliance Awards. They actually gave me 2 minutes for the vote of thanks, which in today's internet time is basically 2 Instagram reels. So I'll keep it quick and completely free of lag. A lot of Gen Zs in our team, as Rohit established in the very beginning. Not a lot of patience there. Buying home appliances has never been simple. I think a lot of people have already established that on stage this evening. I still remember going to Diwali Melas with my family, dragging ourselves through 10 different shops just to compare television's picture quality. We would literally stand there, measure if a refrigerator could fit in our kitchen using imaginary handspans and everything. And whenever we got an aggressive sales pitch from a salesperson, we would use the ultimate Indian tactical retreat. कि भैया 2 मिनट देना, थोड़ा कुछ काम है, check करके आते हैं. We would never come back. We would just go to the next shop, compare the prices. That's all we would do. I think most people in this room would have possibly done that when they were kids, when they were young, with your families. This is the problem that we wanted to solve. This is the problem that we are trying to solve. And that's what actually led to Digit India's Top Appliance Awards 2026. I think the entire team spent more than 3 months testing these devices. We put every product through rigorous testing at our test lab so that a lot of consumers don't end up visiting so many shops like we did. And you get everything about these appliances, about these devices on our website, on our video platforms. And this evening would have definitely not been possible without a few people. So first of all, a massive thank you to Rohit, who's not here right now, our president and CEO, for setting the vision for tonight, for supporting this initiative. He's been a huge support during this process. To all the participating brands, manufacturers, industry leaders in this room, you guys brought the real flex. You delivered products that actually slay under real-world testing. And thank you for embracing independent scrutiny and partnering with us to raise the standard of Indian households. And of course, to our editorial and testing crew at Digit, the ultimate tech nerds. They spent days measuring airflows, noise levels, compressor cycles, all the boring stuff for normal people, by the way. You guys are the real MVPs. Mithun Vasan, who led this project for us. Abhishek, Vyom, Madha, who supported them. Apurv, Narendra and their team. So brilliant production that you guys saw. Our stars, Yash and Krishika, for hosting this event. And of course, Krishna sir, aka Mr. Burra. Your dedication to objective truth is the secret sauce behind the trust we have built for 25 years. And of course, finally to our audience, all our partners, thank you for being here. Thank you for showing so much love
Thank you for keeping the energy 10 on 10 despite the weather that was out there. As Steve Jobs famously said, details matter. It's worth waiting to get it right. Tonight, we celebrated the details that make life at home just a little bit smoother. Congratulations once again to all our winners. Grab a drink, network, and enjoy the rest of the Friday evening. Thank you and good night.